Coordinator with Sanjeevani Life Beyond Cancer, and I'm delighted to be moderating this event. Thank you each and everyone for joining us today. I would now like to kindly ask everyone to rise for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, everyone. Please be seated. Over the past 11 years, Sanjeevani Life Beyond Cancer has extended its support over to 7 lakh cancer patients. Each day, we reach out to more than 500 patients across 26 hospitals throughout India. I would like to request Molly to present a brief audiovisual overview of our organization. Thank you so much, Molly. To remind everyone here, if you know any cancer patient in need of our support, please encourage them to reach us out at our helpline number, that is 8691 000 800, 8691 000 801.
अगर आप किसी भी कैंसर पेशेंट को जानते हो जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, प्लीज उन्हें बोलिए हमें कांटेक्ट करने के लिए एट अ हेल्पलाइन नंबर दैट इज 8691 000 Additionally, if you have any queries during the program related to the topic at hand, feel free to send a message in the chat box. Our profound gratitude. Our webinar today is centered around the theme, Grow Food, Not Tobacco. We are honored to have a panel of distinguished speakers with us today who will elaborate on how impacts our health. And here's something very exciting for all of you. There will be a quiz round is planned where 3 lucky winners will be selected for some exciting prizes. Remember, your attention during the webinar must not be away, because once it is away, you're not going to get what was the answer of it, right? So the more you pay attention, the more rewards you're going to get, and the gifts are really very exciting. Okay. So on behalf of Sanjeevani, I would like to extend our gratitude to our sponsors, NMDC, we would also like to extend our gratitude to Bharat Petroleum. Bharat Petroleum, a Fortune 500 company, is one of India's leading energy producers and a proud Maharatna company. Our robust network of over 19,000 fuel stations and over 6,600 LPG distributors ensures happy customers pan-India. Our rich portfolio in various sectors like lubes, aviation,
gas and international trade puts a seal on our widespread national and global reach. For the greater good, we are committed to the environment and society with the motto of energizing lives. Bharat. And also, we would like to extend our sincere gratitude to Jai Kisan. और भैया सब बढ़िया। और रमाकांत जी कहिए। अब सब कुछ मुंह खोल के बोलने से ही मिलेगा। ओहो, फ्रस्ट्रेशन। और नहीं तो क्या, सब 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 पैसा का खेल। अरे पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे साथ, रुकता ही नहीं, मिल्खा सिंह बन के भाग जाता है हमें देखकर। जब देखो जेब खाली। अगले बार ना बिना जेब का कुर्ता सिलवाएंगे। क्या फायदा है जेब, और फिर इधर उधर झुक झुक के मांगना पड़ता है। सरकार 10,000 दे दो, ए भाई 15,000 दे दो। झुक झुक के हमारा अम्मा जी से बन जाएंगे ये उम्र में। अब अगले महीने खेती शुरू और हमारा जेब खाली। छोड़ो, क्या फायदा ये सब बात करके। छोड़ो, खाते में लिख लेना चाहे है। इन्हें मिलता नहीं उधार, लेकिन चाय चढ़ाते खाते पर हर बार। हुई सुबह तब घंटी बजी, दरवाजा खोल देख कोई नहीं। चौखट पे रखा डब्बा और एक चिट्ठी। रमाकांत ने डब्बा उठाया और पत्नी ने पढ़ी चिट्ठी। रमाकांत जी, ये आपकी खेती के खर्चे के लिए 20,000। किसी से मांगे नहीं इस बार, झुकेंगे तो सिर्फ फसल काटने के लिए। 3 महीने बाद इस डब्बे में पैसे वापस रख दीजिएगा। नीचे दिए हुए पते पर डब्बा छोड़ दीजिएगा। आपका शुभ चिंतक। जी, कोनो नाटक चल रहा है क्या? पता नहीं कौन है। लेकर खेती के 20,000 रमाकांत सीना तान कर चले बाजार। ले, ये तेरा 900 हुआ, मैं खाते में लिख रहा हूँ। नमस्ते रमाकांत जी। नमस्ते नमस्ते। अब कभी वो 900 का बांध दो? नहीं, वो वाला बांध दीजिए। 1200 का माल है रमाकांत जी। हाँ हाँ, वो वाला बांध दीजिए। छोटू 1200 का ला, ये खाते में लिख दूं मैं? नहीं नहीं, नगद में लेके जा रहे हैं आज। 1100 लगाइए। सर्वोत्तम माल से हुई बढ़िया फसल तैयार। 80,000 की बिक्री तो पक्का होगी इस बार। अच्छी बिक्री करके रमाकांत चले तन के। डब्बे में वापस रख के 22,000, 2 ज्यादा उधारी का उपहार। डब्बा लेकर पहुंचे पते पर, रखकर उसे देखा थोड़ा इधर उधर। किसी को ना पाकर लौट चले वो अपने घर। डब्बा लौट आया फिर एक बार। इस बार ये आपके 40,000। सीना तान के चलिए रमाकांत जी, आप किसान हैं। समय से पैसे लौटाने पर अब की मिले 40,000। अब सर उठाकर चलेगा हर किसान। औपचारिक उधार हर किसान का बेड़ा पार। क्रेडिट स्कोर के साथ उधार की सीमा बढ़ती हर बार। इसकी कुंजी है समय पे पैसे लौटाना, फिर बेहतर क्रेडिट का लाभ उठाना। यही नहीं, अब हर तरह के लोन का अवसर पाना। तो अब किसी के आगे झुकना नहीं, हक से आगे बढ़ना है। Thank you to all our sponsors. And now
Without further ado, let's dive in the main agenda. I'm honored to invite our first speaker of the day, the driving force behind Sanjeevani Life Beyond Cancer, Mrs. Ruby Ahluwalia. हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग Ma'am, we would like to introduce you first. Ma'am, we would take a minute to introduce. Yes, ma'am. Yes. Mrs. Ruby Ahluwalia is a former senior bureaucrat. She's an author, founder of Sanjeevani Life Beyond Cancer, and a strong finance professional with an MBA in finance from Hyderabad with a rich experience in project finance and public-private partnership. She is also a nutrition and yoga practitioner. She joined the civil service in the year 1987 and has served in various senior level position during her career spanning 35 years. She has reached out to thousands of souls in selfless acts of charity and care to the cancer patient. Her various interests and achievements have earned her the Changemakers Award from Grant Thornton Savera and the Exceptional Contribution in Governance Award meant for bureaucrats for their outstanding work for society. To continue the same, she has taken an early retirement from her job as a civil servant to put all her time and energies to the work she is doing now through the NGO she founded in the year 2012. And also to add on, Ruby ma'am is also a cancer victim. And she has also written 2 books that is available in Amazon and also in Flipkart. One is The Fragrance of the Wild Soul and the other is Man Bawra. Ma'am, we welcome you. Over to you. Hi, good evening. It's so lovely to see all of you here. And I can see a lot of young students. I can also see some of the patients who are doing various courses with us. And I also see some of the people who work in the hospitals that we work with. So it's so amazing to have all of you in this webinar. And I'm extremely grateful that on this evening you have decided to give your time and join with us over here on World No Tobacco Day. तो आज हमारे साथ एक्चुअली बहुत सीनियर एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में. हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ साइकोथेरेपिस्ट हैं, and we have all these people so that they can talk to you about the harmful effects of tobacco. तो आजकल के जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है बहुत स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम वो लोग कर रहे हैं in different fields, and they are also making very very intelligent choices most of the time. However, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या उनको उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं मिल पाई जितनी बाकी लोगों को मिलती थी, तो उन लोगों ने कुछ चॉइसेस ऐसी सेलेक्ट की हैं जो ना उनके लिए अच्छी हैं और ना सोसाइटी के लिए अच्छी हैं और ना इस पूरे प्लैनेट के लिए अच्छी हैं. तो उसी में से एक है कंजम्पशन ऑफ टोबैको. कंजम्पशन ऑफ टोबैको ना उस जने के लिए अच्छा है जो उसको कंज्यूम करता है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा है और ना ये जो पूरा पृथ्वी है, ये जो प्लैनेट है, इसके लिए भी अच्छा नहीं है. और तीनों चीजों के लिए अच्छा ना होने के बावजूद इसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और हम अपने आप को और अपने आसपास के पूरे वातावरण को परेशान कर रहे हैं इसके कंजम्पशन से. तो आज जो हम लोग वेबिनार करेंगे उसमें ऑफ कोर्स हम लोग ये बात करेंगे कि टोबैको का हार्मफुल इफेक्ट किस तरह से होता है और हम इस पे भी बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं.
मैं आपसे छोटी सी बात इस बारे में करूंगी कि टोबैको को उगाना, ग्रोइंग टोबैको इन योर लैंड, हाउ हार्मफुल इट इज। मैं इस बारे में बात करूंगी। आप सबको मालूम है कि जो हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है, जो हमारे पास वो जमीन है जिसके ऊपर हम पौधे या क्रॉप्स उगा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी काफी लिमिटेड है। तो अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि पूरी लैंड जो है हमारे पास सिर्फ इतनी बड़ी है, और अगर इसमें से हम इतनी लैंड में टोबैको उगा देंगे, इसका मतलब है ये लैंड, ये जमीन जिसके अंदर हम खाद्य पदार्थ या फूड ग्रेन्स उगा सकते थे, हमने टोबैको उगाया। और आजकल हमें मालूम है कि कितनी ज्यादा लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम टोबैको को उगाते हैं तो उस समय पे उस जमीन पे फूड ग्रेन्स नहीं उग पाते, और उसकी वजह से जो भूखमरी वाली प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया में बहुत ज्यादा है और विश्व में और जगहों पे भी ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रही है। एक ये रीजन है जिसकी वजह से हमें टोबैको नहीं उगाना चाहिए। दूसरी रीजन टोबैको नहीं उगाने के लिए ये है कि जहाँ पे आप तंबाकू के पौधे, तंबाकू के पेड़ लगाते हैं, उस जगह पे जो सॉइल है वो इतनी जल्दी डेप्लीट होती है अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ कि उसके ऊपर काफी समय तक किसी और क्रॉप का उगना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली दिस प्लांट, दिस ट्री कॉल्ड टोबैको depletes the land of a lot of micro nutrients of the soil, which really makes the soil uncultivable for a long time for any other crop. The third thing is कि जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, तो हम एक साल में 2 से 3 अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगा पाते हैं। उससे एक तो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ता है और उससे इनकम ऑफ द फार्मर भी बढ़ती है। लेकिन टोबैको के साथ साथ हम इस तरह से नहीं कर पाते, हम ऑल्टरनेटिव फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं कर पाते, बिकॉज टोबैको इज एक्सट्रीमली डिमांडिंग ऑन द सॉइल। तो इतनी सारी रीजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से अगर आप ऐसे किसी भी महकमे में, किसी भी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पे आप फार्मर्स से बात करते हैं, उनके साथ टच में आते हैं, किसानों के साथ टच में आते हैं, तो प्लीज उनके साथ बात करिए, उन्हें बताइए कि हाउ हार्मफुल इट इज टू ग्रो टोबैको। ऑल्सो जब हमारा टोबैको का कंजम्पशन अगर हम कम कर पाते हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो फिर उसकी प्रोडक्शन कम होने लगेगी। तो जस्ट बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ टोबैको you can control the harmful effects of growing tobacco on the soil of this world. जो मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोगों से, या इतने सीनियर एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों से इस बारे में बात करेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी डेटा की बात नहीं करूँ इसके अंदर। और किसी डेटा की बात मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये कोई क्लासरूम नहीं है जहाँ पे आपको बैठ के नोट्स लेने हैं, बताना है कि वहां पे इतने मिलियन लोग मर रहे हैं, इतने मिलियन लोगों को कैंसर हो रहा है, इतना, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। खाली उसकी इम्पोर्टेंस को समझना है और उसके लॉजिक को समझना। उसके लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो अपने लिए ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस कर पाएंगे, और उसके लॉजिक को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी लोगों को किस तरह से अपनी चॉइसेस लाइफ में करनी चाहिए वो बता पाएंगे।
So all of us know over here that tobacco is harmful to us, और टोबैको से बहुत बीमारियां होती हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीरियस बीमारी कैंसर है। और आजकल टोबैको इज वन ऑफ द foremost reasons for cancer in young people as well as in not so young people. आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है आज कि प्लीज, एक तो अगर आपने डिसाइड किया है इस वेबिनार को ज्वाइन करने का, जिसमें अभी मैं 371 पार्टिसिपेंट्स देख पा रही हूँ, और हम लोगों को सपोर्ट किया है ये वेबिनार करने के लिए एनएमडीसी ने, बीपीसीएल ने और जय किसान ने, और यहाँ पे अपने इतने सारे सीनियर एक्सपर्ट्स आए हैं आप अपना टाइम आपको देने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे एक है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात यहाँ पे हो रही है, और ध्यान से सुनने के बाद आज ही बिफोर यू स्लीप जो आपने यहाँ से सीखा वो कम से कम 10 लोगों को जरूर बताएं। आप लोग ये काम कर पाएंगे या मुश्किल लग रहा है? 10 लोगों को बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? पूजा त्यागी यस, वंदना ओके, मोनिका थैंक यू। तो अगर आप यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो 10 लोगों को बताएंगे तो जो लर्निंग है वो मल्टीप्लाई होगी, और आपको मालूम है कि हमेशा संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेक यू लर्न टू मेक स्मार्ट चॉइसेस, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट, एंड आई होप today you have a very good learning and you share that learning with others. Thank you so much, and I'm extremely thankful to each one of you who's decided to be here today. Extremely thankful to the sponsors NMDC, BPCL and Jai Kisan, and extremely thankful to all the senior experts who have decided to give their time to be with us. Thank you so much. Thank you so much, Ruby ma'am. And as always, your sessions are always very insightful. Or the way you inspire in the end, तो हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है. So thank you so much, ma'am. तो अभी आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को क्विज के बारे में, दैट हम बीच बीच में क्विज भी खेलेंगे टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे बहुत प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे हम सुनते हैं बस, एंड पता नहीं उसमें से हम लोग सिर्फ 10 या 20% ही वी कैन टेक बैक, राइट? सो इसीलिए वी हैव ऑल्सो क्यूरेटेड दिस आइडिया हियर कि हमें क्विज भी कंडक्ट करेंगे आपके साथ, और उसके लिए हमें बहुत सारा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हो, ओके? एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि इन द एंड ऑफ द सेशन हम एक फीडबैक लिंक डालेंगे, वो फीडबैक लिंक फिलअप करेंगे तो आप लोगों को हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फीडबैक लिंक पे फिलअप नहीं करते हो एंड इंडिविजुअली आके सर्टिफिकेट के बारे में बोलते हो, वी वोंट बी एबल टू प्रोवाइड दैट। इसीलिए प्लीज फिल अप द फीडबैक लिंक, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Now let us start with the very first question of the quiz, and our quiz master is none other than Ranu Shukla, our program executive from Sanjeevani. Ranu, I would like to hand over to you. Over to you, Ranu. Thank you so much, ma'am. So, as ma'am has already told you all about my name, I'm Ranu Shukla, and I would like to introduce you all to the basic rules of the quiz that we are going to have today. Okay. So the first rule is you all have to keep your. Am I audible, ma'am? Okay. Yes, you are. Yeah. So the very first rule of the quiz is that you all have to keep your videos on. Please make sure that your videos are on, okay? And our second rule is that you'll have, when you are sending your answers, you'll have to send it to everyone so that everybody can see your answers, and not personally to the respective host or co-host. You have to send it to everybody, okay? And our third rule is that you'll have to keep yourself on mute
like I don't think anybody can unmute themselves because we have already muted everybody. And again, my request to you all is that be attentive because the winners are going to get the prizes. Okay, so let us start with the first question for today. Let me see. Okay. Yeah. And if everybody can see my screen. Yes, we can. Okay. Yeah. So our first question for the day is, tell us one reason why we should not grow tobacco. You all can send your answers as soon as possible. Sumki ma'am and I, we are going to monitor your answers. आप सबको आंसर चैट बॉक्स पे डालना है, तभी हम उसे काउंट करेंगे. प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए. हमें एक रीजन बताइए, एक कारण बताइए व्हाई हमें टोबैको ग्रो नहीं करना है. Any one reason why we should not grow tobacco? कोई भी एक कारण बताइए जिसके लिए, जो मतलब जिसकी वजह से हमें टोबैको जो तंबाकू जो है मतलब उगाना नहीं चाहिए. Yeah. आई कैन सी लॉट्स ऑफ आंसर्स. बहुत सारे आंसर्स हमें आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट सभी लोग हमें करेक्ट जवाब दे रहे हैं. सो आई थिंक रूबी मैम, आपने जो बोला, आपने जो बताया, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, एंड वी कैन गेट लॉट्स ऑफ आंसर्स. यस. So Ranu, you can tell us when we will stop the answers for these questions. यस. तो फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है उसके जिन्होंने आंसर किया है, हमारे पास वो नाम आ गए हैं, हमने उसको नोट डाउन कर दिया है, बट देखते हैं कि वो नाम हमें हमारे साथ लास्ट तक रह पाएगा या नहीं. ओके, सो यस. सो नाउ अभी प्लीज आप लोग कोई भी आंसर्स ना दे, अभी हमने ये स्टॉप कर दिया है. वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर. फिर हमें और बहुत सारे एक्साइटिंग सवाल मिलने वाले, क्वेश्चंस मिलने वाले एक्चुअली. Okay, so thank you so much, Ruby ma'am. So now let us move to the next speaker, Dr. Vasudeva Bhatke. Dr. Vasudeva is currently working as an associate professor and in charge head division of pediatric hematology and oncology. He has worked as senior resident pediatric oncology in Tata Memorial Hospital, Mumbai. He has vast experience in a cancer center serving over 2,500 pediatric cancer patients annually. In diagnosis and management, inpatient and outpatient of children with all types of hematological and solid cancer. He is a member of various academic societies such as Indian Society of Neuro-Oncology, Indian Academy of Pediatrics, and many more. He has also been awarded awards such as Outstanding Student for DM Pediatric Oncology by HBNI University, also awarded Best Oral Paper for Single Fixed Dose Ribocurecase for treatment of hyperuricemia in children with hematolymphoid malignancy, awarded Best Oral Paper for voriconazole plasma level, and many more.
He has done many national and international publications as well. So, sir, we are really very proud to welcome you. Sir, over to you. Yeah, thank you very much. I hope I'm audible. Yes, sir, you are. So I will just share my screen. And first of all, I would like to thank Sanjeevani Life Beyond Cancer for giving this opportunity. And I think it's a very important topic. Hope my share is being, the screen is being Yes, seen. yes, Yes. we can. Yeah. So I have put my slides in English, but I will talk in Hindi as much as possible. So सबसे पहले सब लोग वही पूछते हैं कि आप पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के कैंसर आप देखते हो, तो आप क्यों ये स्मोकिंग और इस चीज के बारे में डिस्कस करते हो. सो क्या होता है कि हम लोग बच्चों को तो ट्रीट करते हैं, बट बच्चों में ये प्रॉब्लम हम देखते नहीं है. बट जो बच्चे को हम ट्रीटमेंट करते हैं उनमें लगभग 80-90% बच्चे ठीक हो जाते हैं, लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं. और ये बच्चे जब सर्वाइवर्स हो जाते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट खत्म होके 5 साल 6 साल हो जाता है, तो ये रिस्क ये बच्चों में आता है कि तंबाकू सेवन और उससे जुड़ी हुए हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो जिन बच्चों को ये कैंसर होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, ये बच्चों को वापस उनकी जिंदगी में सेकेंड मैलिग्नेंसी यानी कि दूसरा कोई कैंसर आने का चांसेस हमेशा ज्यादा रहता है. सो इसके लिए ये हम भले हमारा जो कैंसर बच्चों में जो देखते हैं शायद तंबाकू के वजह से नहीं है, बट हम ये हमेशा जो भी बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट खत्म होता है, उनको और उनके माँ बाप को ये मुद्दे पे हम काफी बार चर्चा करते रहते हैं. तो जैसे रूबी मैडम ने बताया था, तंबाकू ऐसी चीज है जिसको अगर देखा जाएगा तो एक सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है डेथ होने का. और तंबाकू हम कभी कभी सोचते हैं कि सिर्फ सिगरेट और बीड़ी ऐसे चीजों में रहता है, बट काफी बार स्मोकलेस टोबैको जैसे स्नफ बोलते हैं, या कोई लोग तंबाकू मुंह में ही रखते हैं, सुपारी ऐसे चीजों में भी ये रहता है. तो दोनों टाइप का तंबाकू भी हो सकता है. तो मेरा जो आज का ये है टॉपिक जो है वो मेनली डेंजर इफेक्ट्स ऑफ टोबैको है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इफेक्ट्स रहता है. सो इसमें जैसे रूबी मैडम ने बताया था, कैंसर जो है सबसे कॉमनेस्ट डिजीज हेल्थ इफेक्ट रहता है. तो कैंसर काफी जगह पे हो सकता है, जैसे कि लंग्स में हो सकता है, या मुंह के अंदर जैसे लिप्स, टंग, नोज, यूसोफेगस जो हम बात करते हैं, वॉइस बॉक्स, थ्रोट, ऐसी जगह से भी स्मोकिंग के वजह से और तंबाकू के वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है. स्मोकिंग के वजह से एक और प्रॉब्लम जो है कॉमनली जो हम बड़ों में देखते हैं वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, जिसको COPD करके हम बोलते हैं. इससे क्या होता है कि थोड़े ही चलते हुए सांस फूलने लगती है, और थोड़े मरीजों में जिनको अस्थमा एलर्जिक प्रॉब्लम भी रहता है, अगर वो स्मोक करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, उनको भी ज्यादा चांसेस रहता है जब भी वो बड़े होते हैं, तो ये अस्थमा अटैक्स वगैरह ज्यादा आने का भी चांसेस रहता है. कैंसर और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम छोड़ के हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक और ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, ये एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट, एक हेल्थ इफेक्ट है स्मोकिंग और टबैको के वजह से. और स्मोकिंग के वजह से ये ब्लड क्लॉट्स वगैरह जो आपने सब लोगों ने सुना होगा, ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, और कभी कभी ये हार्ट, ब्रेन और पैर में भी हो सकता है. अगर ये कभी पैर में होता है तो ये मरीजों में पैर एम्पुटेट या काटने का भी जरूरत पड़ सकता है अगर वो सीवियर रहेगा. तो अगर हम देखेंगे डायबिटीज में भी 2 टाइप का रहता है, टाइप 1 और टाइप 2. तो ये टाइप 2 करके जो डायबिटीज रहता है उसका रिस्क भी जो टोबैको स्मोकिंग रिलेटेड है वो 30 to 40% ज्यादा रहता है. ये सब छोड़ के भी जो तंबाकू या स्मोक करते हैं, जो सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम, तो ये इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है.
डेंटल प्रॉब्लम्स भी, जैसे दांत काला पड़ना, दांत गिर जाना, दांत में सेंसिटिविटी ज्यादा होना, वैसे गम डिजीज मतलब मसूड़ों में तकलीफें होना, ये चांसेस ज्यादा रहता है। ये मरीजों में ये भी देखा, जो तंबाकू और स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनमें सुनाई देने का भी कम हो सकता है जैसे एज हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई कान के अंदर जाना चाहिए वो कम हो जाता है। वैसे ही भी आंख में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फर्टिलिटी में, प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। मेल्स में स्पर्म क्वालिटी, जो शुक्राणु करके बोलते हैं, उसका क्वालिटी भी कम हो सकता है। और औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डी में जो कैल्शियम का प्रमाण जो रहता है ये काफी कम हो सकता है। सो ये जो इफेक्ट्स जो देखते हैं वो हेल्थ पे मेनली इफेक्ट करता है, बट सराउंडिंग्स में भी हमारा इफेक्ट करता है। जैसे कि जो फैमिली अगर समझिए उसमें काफी 4-5 लोग रहते हैं, अगर उसमें कोई स्मोकर रहता है तो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है वो सब उनको पैसिव स्मोकिंग, वो शायद एक्टिवली स्मोकिंग वगैरह नहीं कर रहे होंगे, बट ये उसका इफेक्ट बाकी जो भी फैमिली मेंबर है उसके ऊपर भी पड़ता है। फाइनेंशियल इफेक्ट्स तो आप सब लोगों को पता है कि इसमें जितना खर्च होता है, सिगरेट्स, बीड़ी हो या कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट्स हो, इससे कभी काफी सारे फैमिलीज में फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी पड़ता है। ये सब छोड़ के इससे भी मेंटल इफेक्ट्स भी काफी सारे रहते हैं, जो एक और एक्सपर्ट जो वो फील्ड में है वो इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये जो हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो हर एक स्पीकर अपने आप अगले जो 6-7 सेशन है उसमें डिटेल में आपको समझा देंगे। Thank you so much, sir, for joining us, and really very important and also insightful points. Thank you so much. So, जैसे कि वासुदेव सर ने हमें बताया, तो उसके ऊपर let us go to the next question of the quiz. Ranu, over to you. Yes, ma'am. So I hope सबने वासुदेव सर ने जो भी बोला वो सबने ध्यान से सुना होगा। वो हमें पता चल जाएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की आंसर्स असेस करेंगे तो। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so our next question is, smokeless tobacco is available in which form? And these are your options: cigarette, bidi, snuff, cigar. So I will translate in Hindi also for you all. Smokeless मतलब धुआं रहित तंबाकू किस फॉर्म में अवेलेबल है? पहला है सिगरेट, दूसरा है बीड़ी, तीसरा है स्नफ, चौथा है सिगार। तो ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, एंड वी हैव जस्ट 1 मिनट फॉर यू। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। आपके पास सिर्फ 1 ही मिनट है। 1 मिनट के अंदर अंदर जो भी आंसर्स आपको करेक्ट लगते हैं प्लीज दे दीजिए। आप लोग किसी किसी का आंसर्स ऐसे आ रहे हैं ना डायरेक्टली मैसेज, तो आप लोग होस्ट को डायरेक्ट मैसेज कर रहे हो। प्लीज जब आप आंसर्स देते हो उसको एवरीवन करके दे। यस, लास्ट 10 seconds. okay, I'm getting lots of answers. Yeah. And I Plus must 3 tell seconds. कि कुछ नाम Stop. तो रिपीट हो रहे हैं। Yes. Ma'am, we can stop. Time is up. Okay, time is up. ठीक है, so thank you रानू। हमें यहाँ भी बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ गए हैं। सो पार्टिसिपेंट्स आर रियली वेरी स्मार्ट और सब लोग बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं। सो
आई थिंक हमें रिजल्ट अनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई थिंक 10 से ज्यादा ही हमारे पास विनर्स आने वाले हैं अभी. तो यस, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्पीकर. The next speaker we have with us is Dr. Gauri Rukkam. Dr. Gauri Rukkam is the founder of Holistic Health and works mainly in 3 areas of personal consultation, workshops and seminars, and teaching. She has done her PhD from Yoga University, Bangalore, and was also the topper in MSc. She is the member of Indian Dietetic Association, Nutrition Society of India, Association of Food Scientists and Technologists, International Institute of Mahayoga and Natural Hygiene, USA, and International Yoga Associations. So, ma'am, we would like to welcome you, and we are very glad to have you here with us. Yes, ma'am. Ma'am, now you can unmute yourself. Yes, thank you very much. Hello, ma'am. Welcome. Thank you, Sumki, for that lovely introduction. So my respectful pranams to each one of you who have joined us this evening. The topic is eat food, not tobacco. Why not tobacco? You will get to hear from all the wonderful speakers before and after me in great detail why not eat tobacco. The crux of the matter is tobacco has a chemical called nicotine, which is very addictive because it affects the brain's reward system by producing dopamine. And this is exactly why, even if we want to let go of tobacco, tobacco doesn't leave us because it is habit forming, addictive. I have no control over it because it has taken control over my mind. Also, you should remember the nature of our mind. The minute I say no, the mind asks more of it, even more strongly. So we cannot handle it in this way. So what's the solution? Solution sounds very simple. What if I can create healthy sources of dopamine production so that this unhealthy source of dopamine production can be let go or get rid of? Is it possible? Do you all think so? Yes? Wonderful. You should always remember one thing, that it is very, very important not to find the wrong or the unhealthy sources. You are making all the time and effort to let go of this wrong, unhealthy habit and choose the lesser evil. To leave it is not wise at all. It is very, very important to choose the healthy option. Now, let's see how to do this. As the title goes, the food. And when we think of food, we always think what comes onto our plate is the food. But not necessarily. It is. But yet, whatever input comes into our body-mind complex is food. Just look at what we consume through the senses, what through the thoughts into our mind. All of these finally decide our health, isn't it? So all of these become food. Now I'm going to just quickly and briefly list down some of these which can create that dopamine effect inside our system. You can choose any of them, a combination of them, or all of them, because you get a bonus of being healthy, fit, lean, and disease-free all your life, not just about quitting the smoking or tobacco usage. Now, let me get my list. So the very first one is the food on the plate itself. If we can increase fresh produce, what is called fresh produce? Eating a lot of fruits, vegetables, green leafy vegetables can create that dopamine effect inside us. Not only that,
even eating plant protein rich foods like nuts, seeds, legumes, that is dals, grams, and sprouts, also can give similar effect. And increasing the fiber rich foods can increase the beneficial bacteria in our gut and make our gut healthy. How does this relate? When our guts are healthier, they can produce the dopamine, because we have lots of dopamine receptors in our gut. But only when the gut is healthy, because of the presence of these beneficial bacteria, can they work to their optimum. So how do we increase this? By providing fiber, because when you give fiber, all these microbes eat them and multiply and thrive and take care of our guts. And the next important thing is exercise. Any type of physical activity can increase dopamine inside our bodies. You choose any activity you like and which gives you joy. It can be simple walking, jogging, swimming, dancing, playing a game, or anything for that matter, swimming, gardening, anything. At least 1 hour in a day, you can split it or keep it together, which will increase the dopamine. One of the best physical activities you can think for yourself is yoga asanas, and including a little of pranayama, deep breathing, which can give you even more better effect, because it will calm down your mind, give clarity of mind so that you can make the right choices. The next one is sleep. Sleeping early in the night and getting good sound sleep through the day will create enough or more dopamine early in the morning, which will help you wake up fresh and alert. Sunlight. Exposure of your body, direct skin, to the sunlight as much as possible through the day releases dopamine in your brain. Similarly, spending time in nature. It could be anything. A forest walk, climbing a hill, taking a trek near a water body, ice-peaked mountains, anything in nature can also do the same job. An act of kindness, being kind to yourself and doing an act of kindness, at least a couple of them through the day, as simple as helping somebody to cross the road or anything without expecting anything, also creates dopamine inside. Music, any melodious, light music which you like can also create, because mind is always looking for patterns in the music, and when it looks or gets those patterns, it gets rewarded by dopamine. Meditation. I know it might sound a little difficult for you, but a lot of research tells us that after practicing meditation for some time, almost 65% increase in endogenous dopamine release happens. And being grateful for all that you have also increases dopamine. And also try and create something meaningful of what you study or what you work, or if not that, at least create hobbies which gives you joy and pleasure, and that is also going to increase the dopamine. So with that, I think you've got enough possibilities and options of how and what is practical for you and what you can create for yourself. Of course, please choose whatever suits you, but do not use tobacco as an option for stress buster, because your stress are not going away after using tobacco, right? It comes back with multiple more problems. So understand this and ensure not to use tobacco in any of its form, because you're the asset for the nation, for your parents, and for your institutions. So wishing you all the very best and thanking Ruby for this opportunity. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Very well said, ma'am, that we are all the young generation is the asset for the country, as well as our parents, our universities, college where we study in. So, and also when we talk about dopamine, it is the happy hormone, which we usually understand when we talk of it. And ma'am has said such small things कि आप कैसे कर सकते हो उसको, कैसे आपको इतना easily वो मिल जाएगा, because आजकल हमारे पास सब होता है, but
खुशी के अलावा. So you have so many, small things how you can get this like hormones activated in your body. So thank you, Gauri ma'am. We are very happy to have you here. So now we will move to the next question from the quiz. तो देखते हैं कि गौरी मैम के जो सेशन है वो लोगों को समझ आएगा. तो रानू, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So let's see what is our next question, and please ensure whether you all can see my questions or no. Okay, I will keep it like point to ask you all also. Yeah. Yes, Ranu, please share the screen. Yes, ma'am. Ranu, we cannot see the question. Yes, ma'am. Actually, I think there is some issue here. Yes. Give me a second, ma'am. Yeah, तो हमारा जो क्वेश्चन था, it was what food on our plate do help produce dopamine. तो आप लोग बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी आ गए हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिख गया था स्क्रीन में when Ranu was sharing it. Yeah. Yes, I can see lots of answers. Yes, so with this we are closing the answer round here. तो हम अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं. तो अभी आप आंसर देना बंद कर दीजिए because we have already got the winners. So moving to the next speaker, Dr. Shambhavi ma'am. Yes. So Dr. Shambhavi is the co-founder of Empty Mindscape LLP and the creators of Urja Manifest, The Light Within, a virtual holistic studio where mental health is nurtured using sustainable and systematic approach. She has completed PhD in psychology and holds an MBA degree in human resources. In her 12 years of practice, which is trauma-informed and queer affirmative, Dr. Shambhavi has worked with clients from different cultural and ethnic backgrounds. With a considerate experience in the corporate world, she has backed first-hand training in various healing modules, which include art-based therapy, hypnotherapy, emotional freedom technique, EFT, REBT, CBT, narrative therapy, animal-assisted therapy, and many more. She has worked as a visiting counselor at the Indian Air Force Station and Naval Base of Jamnagar, and as a counselor for Acer's Nand Vidyaniketan School, Jamnagar, Sunshine Worldwide School, Goa, and Matru Chaya and Orphanage in Goa. Dr. Shambhavi is a trained mindfulness teacher as well as and believes that mental health and wellness is not restricted to mental disorders, but there is a lot of scope to enhance existing state of well-being. So Shambhavi ma'am, we would like to welcome you. Thank you, Sanjeevani. Good Hi, evening, ma'am. Sabiko. Yes. Okay. Good evening, everyone. And let me just change the video. Okay. Good evening once again, and thank you for that warm welcome and the introduction as well. सभी को good evening मेरे तरफ से. काफी सारे जाने पहचाने चेहरे में नजर आ रहे हैं. So let's quickly begin. मेरा topic, I'm sure जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता भी होगा कि हम बात करेंगे स्मोकिंग, टबैको, उसका जो एडिक्शन होता है वो, और उसका कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ, यानी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ. ज्यादा करके मैं हिंदी में बोल रही हूँ. अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आता है देन प्लीज आपका मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा. मैं उसी चीज को दोबारा इंग्लिश में रिपीट कर दूंगी. ठीक है? ऑलराइट. तो
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम किसी भी शारीरिक समस्या यानी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमारा सारा जो ध्यान होता है ना वो फिजिकल बॉडी तक ही सीमित रह जाता है, इट गेट्स लिमिटेड बॉडी तक। और जब हम इसी प्रकार से, जैसे हम टबैको का एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन, जब इस विषय में भी जब बात करते हैं ना, तो कई बार हमारा जो ध्यान है ना वो यहीं तक रह जाता है कि कैसे हम हमारे बॉडी को होने वाले प्रॉब्लम से कैसे हम अलग कर सके। हम स्मोकिंग इसलिए छोड़े क्योंकि बॉडी को जो नुकसान होता है वो हमें नहीं झेलना है, विच इज ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। हमें पता है कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होता है हमारे शरीर पर। और जितने हमारे पहले के भी स्पीकर्स आप सभी के साथ शेयर कर रहे थे, उसमें से हमें ये भी पता चला ना कि उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हम तक ही नहीं सीमित रहते, बट हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हो, हमारे कोवर्कर्स हो, सोसाइटी इन जनरल हो, सभी पे उसका इम्पैक्ट होता है। जहाँ यह ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक विषय है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वो कौन सा है विषय? वो है कि स्मोकिंग का कनेक्शन या स्पेशली स्मोकिंग एडिक्शन का जो कनेक्शन है वो हमारे माइंड के साथ और हमारे मेंटल हेल्थ के साथ कैसे होता है। तो उस विषय पे हम थोड़ा सा भी बात करेंगे। अगर हम स्मोकिंग एडिक्शन की बात करें तो आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे ना, हम में से कोई भी हमारे मम्मी के वूम से एडिक्टेड पैदा तो नहीं हुआ ना, नन ऑफ अस, कोई भी ऐसे स्मोक करते हुए बाहर नहीं आता है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं हम डेवलप करते हैं। जो चीज डेवलप होती है अलग अलग फैक्टर्स का रोल होता है, वैसे ही स्मोकिंग के एडिक्शन में भी काफी अलग अलग फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे क्या उसमें इफेक्ट, किस बातों का कंट्रीब्यूशन होता है, देन लेट्स लुक एट उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एंड देन ब्रीफली हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें किसी की मदद करनी है, फिर वो हमारी मदद हो या किसी और की मदद जो स्मोकिंग में है, तो उन्हें हम क्या अपने तरफ से बोल सकते हैं या कैसे डील करने में उनकी मदद कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद पहले क्या होता है। जितने हमारे पास स्टडीज हुए हैं या मान लीजिए जितने क्लाइंट्स हम देखते हैं एज अ थेरेपिस्ट, कई बार जो हमें पता चला है वो ये ऐसा है कि स्मोकिंग जब शुरू होता है उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से एक मेजर कारण है एक्सप्लोरेशन का, जो शुरू होता है कई बार किशोरी अवस्था में, यानी कि एडोलेसेंस वाला एज, जब हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, या अपने आप को हम कैसे देखते हैं, सेल्फ इमेज, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं। और ऐसे में थैंक्स टू आवर मीडिया ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, स्मोकिंग को एक कैटेगरी में डाला जा रहा है, यानी कि जो बहुत कूल है, जो बहुत अच्छे है, स्मार्ट है, जैसे अगर कॉलेज का कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो उसके पीछे लड़कियां जा रही है। सो द इमेज जो हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है ऑफ समवन हु स्मोक्स इज समवन हु इज वेरी कूल, वेरी डिजायरेबल। तो ऐसी अवस्था में, जो मैं किशोरी अवस्था की बात कर रही हूँ, उस स्टेज में, उस स्टेट में, उस बच्चे का, है तो बच्चा ही एंड ऑफ द डे, उनकी सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती है। और वहां पे जो उनके अपने चैलेंजेस हो रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, टू एक्सेप्ट देमसेल्फ, उस सिचुएशन में ये जो दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज वेयर द एक्सप्लोरेशन बिगिंस। चलो एक करके देख लेते हैं कैसा लगता है। और जैसे मैम ने पहले बताया ना, जब आप स्मोक करते हो या आप टबैको का सेवन करते हो तो उसमें जो निकोटिन नाम का सब्सटेंस है, वो निकोटिन डायरेक्टली आपके ब्रेन में एक केमिकल को अफेक्ट करता है विच इज कॉल्ड एज डोपामाइन। ये जो डोपामाइन है ना, ये जब भी रिलीज होगा ना आपको बेहद खुशी मिलेगी, बहुत मजा आता है। पर ये डोपामाइन जब रिलीज होता है, वो उस सेवन के बाद, जैसे वो सेवन कंप्लीट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा स्मोकिंग, वो अपने आप नीचे भी चला जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा ब्रेन उसके लिए हमेशा क्रेव करेगा, यानी कि मुझे ना स्मोक करने का मन कर रहा है, कहीं पे किसी के साथ लड़ाई हो गई, चलो स्मोक करते हैं, किसी प्रकार का टेंशन आ रहा है, काम का स्ट्रेस है, चलो स्मोक करते हैं। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को ये समझ आ गया होता है कि ये स्मोक करने से ना बहुत मजा आता है। कुछ देर के लिए तो आता है ना, पर बहुत मजा आता है। उस कुछ देर के मजे के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और ले लेते हैं, एक और सिगरेट, एक और सिगरेट या तंबाकू खाना। धीरे धीरे हमारा वो अच्छा लगने वाला जो टाइम है ना,
वो भी रिड्यूस होता है। यानी पहले अगर उसका इफेक्ट आपके लिए 10 मिनट रहता होगा, अभी उसका इफेक्ट 5 मिनट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले शायद 6 घंटे में एक बार सिगरेट पीते थे, अभी 6 घंटे में शायद 6 बार सिगरेट पी रहे हो। यानी उसका जो एक अर्ज होता है ना, वो तलब एक शब्द हम यूज करते हैं, आई एम नॉट श्योर हिंदी में वही बोलते हैं, बट वो एक अर्ज कि एक और पीना है, एक और चाहिए, वो कम 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 मतलब स्पेस कम हो जाती है, फॉर विच द नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट वी स्मोक, नंबर ऑफ सिगरेट का सेवन जो हो रहा है वो बढ़ता जाता है। नाउ दिस इज वेयर द एडिक्शन बिगिंस। लेट मी ऑल्सो टेल यू, एडिक्शन का कोई हमारे पास नंबर नहीं है कि हाउ मेनी सिगरेट्स अ डे यू विल कंक्लूड एज एडिक्शन। एडिक्शन वो है जब आप ना चाहते हुए भी उसके तरफ जाते हैं, कि मैं चाहती हूँ कि मैं स्मोकिंग बंद करना चाहूँ बट मुझसे हो ही नहीं रहा है। व्हेन द सिगरेट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू, उसे आप एडिक्शन का नाम देते हो। अब क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये जो एडिक्शन लगी है ना, वो कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि लाइफ के स्ट्रेसर्स तो कम होंगे नहीं, वो तो बढ़ते ही रहते हैं। और हमने क्या सीखा है, हमने स्ट्रेस से निपटने के अच्छे या हेल्दी तरीके ना सीखते हुए हमने सीखा है कि स्मोक कर लो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। दिस इज वेयर दैट बिहेवियर, वो हैबिट के तरह एक फॉर्मेशन होती रहती है, होती रहती है। नाउ जब हम इसको तोड़ने की बात करते हैं, हाउ शुड वी ब्रेक इट, ब्रेक दिस हैबिट, एंड व्हाई शुड वी ब्रेक इट, लेट मी आल्सो टॉक अबाउट व्हाई शुड वी ब्रेक इट। ये तो हमें पता चल गया कि क्यों ये डेवलप होता है कई बार। अब ये डेवलप होने के बाद क्या क्या होते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमारे फिजिकल बॉडी पे इसके प्रॉब्लम्स होती है, बट एट द सेम टाइम आपके मेंटल हेल्थ पर, यानी आपके मानसिक सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। इन विच वे, वन, आपको कई बार आपकी जो एंजाइटी के रिस्पॉन्स होते हैं वो ज्यादा आते हैं, वो ज्यादा तीव्र आते हैं। एंजाइटी यानी कि घबराहट, ये ज्यादा होना। अगर आप उस वक्त सिगरेट नहीं सेवन करते हो तो फिर विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, कई लोगों को हाथ कांपने लग जाते हैं, बेचैनी होती है, पसीने आ रहे हैं। दैट इज वेयर द डिपेंडेंसी हैज बीन क्रिएटेड। इसके अलावा एक और मूड डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। शायद नाम सुना होगा, शायद इस शब्द का इस्तेमाल भी आपने किया होगा कभी ना कभी, पर डिप्रेशन जो मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक बीमारी है, एक मूड डिसऑर्डर है। और जितने हमारे पास स्टडीज अवेलेबल है वो ये भी कहते हैं कि इसका जो रेट है वो स्मोकिंग या स्मोकिंग एडिक्टेड लोगों में ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, स्मोकिंग सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम नहीं लाता है, उससे भी ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ के लेवल पर भी प्रॉब्लम लाता है। यानी समवन who has developed let's say lung cancer, उनको साथ ही साथ डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्मोकिंग, अगर आदत लगी है, उसकी एडिक्शन लगी है, तो उसको छोड़ना जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर ट्राइंग, अपने लिए ट्राई कर रहे हो या किसी अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो उसमें से बाहर निकालने के लिए, तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ पे काम करना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप जो कर सकते हो वो है उनको सपोर्ट देना। कई बार वो सपोर्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। 2, अगर आपको पता है कि ये पर्सन किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रहना पसंद करता है जहाँ पे लोग स्मोक करते हैं, या इतने बजे ये उस जगह पे जाते हैं स्मोक करने के लिए, ट्राई टू हेल्प देम चेंज देयर रूटीन। किसी तरीके से उस रूटीन वाले उस टाइम पर कुछ और एक्टिविटी करने में उनकी मदद करिए। आप दोनों साथ में मिलकर अगर कुछ कर सके, उस समय में आप कहीं जा सके, या ऐसी जगह जहाँ पे उनको सिगरेट या सिगरेट से जुड़े हुए या टबैको से जुड़े हुए ट्रिगर, यानी चित्र दिखना, या कोई वहां पे दूर कोई ठेला जैसा होता है जहाँ सिगरेट मिलता है, ऐसी जगहों से दूर रखना, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है अपने विचारों पे ध्यान देना, अपने थॉट्स पर ध्यान देना। क्योंकि व्हाट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, स्मोकिंग का जब एडिक्शन लगती है, हम जब एक्सेसिव करने लगते हैं, उसमें हमारे विचारों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ बॉडी नहीं मांगता उसको, बट जब हमारे विचार हमें एक हेल्पलेस, बेसहारा ऐसा फील कराने लगते हैं ना, तो हम सहारे के लिए कहीं ना कहीं भागते हैं, एंड सिगरेट कैन बी वन ऑफ दोस। सो कीप मॉनिटरिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को मॉनिटर करते रहिए कि इस मोमेंट में जब मुझे लग रहा है कि मैं सिगरेट पीऊं या मैं तंबाकू खाऊं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मेरे विचार कह रहे हैं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं खराब हूँ, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी जाएंगे नहीं। ट्राई एंड लुक एट योर थॉट्स।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। एंड अगर हम अपने लेवल पे काम करेंगे तो ना बस हम एक इंडिविजुअल को चेंज करते हैं, हम फैमिली को, हम एक कम्युनिटी को, एक एंटायर इकोसिस्टम को हम चेंज करते हैं, right? So just one person can bring lot of changes. I hope there was some information जो आप अपने साथ लेके जाएंगे और अपने तक ना सीमित रख के और भी लोगों के साथ स्प्रेड कर सकेंगे, right? Thank you. Thank you so much, Sambhavi ma'am. This was really very insightful session. आपने बड़े सुंदर से बहुत कॉमन वे पे बताया है कि कैसे एक सिगरेट पीने वाले को हम एडमायर करते हैं एंड हाउ वी इमिटेट देम, और सोचते कि हम भी ये करेंगे तो हाउ इट द एंटायर थिंग स्टार्ट्स। और मैम ने वेरी वेल शी सेड कि हम एक से ही वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। अगर हम खुद स्टार्ट करें देन वी कैन ऑल्सो प्रमोट इट, कि कोई और भी हमें देख के चेंज करे। जैसे कोई और हमें सिगरेट पीते हुए देख के इंस्पायर होता है, कोई हमें ना पीते हुए देख के भी कोई इंस्पायर हो सकता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ things like that. So yeah, Shambhavi ma'am, thank you for your session. And जो अभी हमारा क्विज का क्वेश्चन है that is a bit very tricky. आप लोग सवाल पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप लोग इसका आंसर कीजिए. So Ranu, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing the screen. Yeah. So हमारा जो next question है वो है डॉक्टर शंभवी मैम ने जो भी अभी बताया हमें उससे related है, okay? And the question is, which mood disorder can excessive smoking result in? So everybody start giving your answers. I hope सबको question दिख रहा है और आपका time start होता है अब. क्विज की सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे साथ स्पीकर्स है, our personalities, they are also taking part in it and they are also answering. तो I hope आप में से किसी एक स्पीकर को भी हम विनर अनाउंस कर पाए. So I can see lots of answers from the speakers as well. Last 10 seconds. Last 5 seconds. Time up. Thank you. Okay, so moving to our next speaker, I would like to invite Professor Vinita K. Professor Vinita K is currently working as the Registrar Evaluation and HOD BSW Department of SW Mangalore. She was the former NSS coordinator and nodal officer of Youth Red Cross Society, Mangalore University. She was a third rank in Master of Social Work in the year 1986 from Mangalore University, black belt in karate and national level karate champion in the year 1982 held at Hyderabad. She is also the recipient of Karnataka Rajyotsava Award for the leadership in plastic eco movement. She is the recipient of Academic Excellence Award from Alumni Association of School of Social Work Bangalore chapter in 2022, Social Impact Personality Award from Wisdom Education and Abhijanya Education Private Limited in the year 2022 for the contribution in the field of education. Also the Trusted Teacher from Global TV in the year 2022, and also the Best NSS Program Officer Award at the state level in the year 2012. So ma'am, we are very proud to welcome you. Ma'am, over to you. Namaste. Namaste, ma'am. Thank you for the beautiful introduction and the warm welcome. I am pleased to be here today in this platform when we all are celebrating World No Tobacco Day. The theme, "We need food, not tobacco," really attracted. And when I was talking to the college students, they were also very happy to hear about the slogan. And even I was very impressed
by the slogan. And I would like to congratulate Sanjeevani Life Beyond Cancer under the able leadership of founder chairperson Ruby Ahluwalia and under the leadership of Sumki Begum, who is beautifully coordinating the whole program for all of us here. And today, as I'm thanking the organizers for this beautiful program, I have few reasons for that. One, because by spreading awareness about tobacco, the ill effects, we can prevent many diseases and we can prevent countless deaths as well. We can prevent many diseases and we can prevent countless deaths as well. At the same time, my concern is not only about human beings, but also about our Mother Earth, Mother Nature, because we need to protect our Mother Earth by protecting our ecosystem. But when we grow tobacco, this is not possible. That's why my concern is also towards Mother Nature in protecting her by saying no to tobacco. We are all living in a global village. Let me briefly tell about at least 10 countries where tobacco is grown. China, India, Brazil, United States, Indonesia, Zimbabwe, Turkey, Malawi, Argentina, and Italy. And India ranks second. And among the tobacco growing states in India, we have Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar, and Maharashtra. With this list, we need to seriously think and we need to seriously work hard to have this day, to visualize this day, and also to make it this dream a reality, that is World No Tobacco Day. My concern is, how do we attain United Nations Sustainable Development Goal 2, that is zero hunger? When 120 countries out of 195 countries have tobacco cultivators, 9 out of 10 largest tobacco cultivators are low and middle income countries. And then 4 out of 10 countries are low income food shortage countries. Now the concern is, when tobacco cultivation is so much all around us, how do we manage this? How is it going to affect our ecosystem? That is in our hands. We can do it, but we need to work together. We need to work together. We need to again and again say to ourselves every day that we are together, we are going to work towards it. Now, when tobacco cultivation needs intensive handling of insecticides and toxic chemicals, leading to desertification, and it depletes our soil fertility, leading to soil degradation, do you think we need to grow tobacco? 100% answer is no. 3.5 million hectares of land converted for tobacco growing each year globally, leading to deforestation of 2 lakh hectares a year. This destructive impact on ecosystem, can you imagine what is the future? What is the future of the younger generation? If we go on doing this, what are we going to eat? How are we going to survive? Can we survive all alone? No, impossible. And think of that cigarette butt, the most common litter around us, cigarette butt, which harms the wildlife and also our ecosystem. So what
is the key word here. We need to remember one key word, that is coexistence. We as human beings cannot be selfish. We need to think of all the other creatures on this earth. The God's creation is so wonderful. We need to have that coexistence. We need to save one earth and let us protect that one earth. Moving on from earth to our lovely children, our serious concern is about our children. Our future of the country depends on these children. Are they free from this tobacco epidemic? Child labor is woven into this tobacco cultivation. It leads to the problem of violating of the right of education to the child who is involved in tobacco cultivation. And also, absolutely, it is the violation of human rights when children are involved in tobacco cultivation. Let us not involve the innocent children. What have they done? Why are we doing? We need to reflect on this. What we can do as social workers, as NGOs, our commitment is mainly to bring about awareness. First of all, to bring about awareness in ourselves, to say very strongly no to tobacco, and also to create awareness around us. From where do we start this awareness? Let it start from me and from my house. Let us see what is happening in our own homes. Let us bring about this awareness in our own homes, with our parents, with our children. Let us catch them young so that they know what is the danger. So we need to catch them young. It's all of us know it's very difficult. Not that it is impossible, but it is difficult. Catch them at a later stage and then do all this process of counseling and rehabilitation takes a longer time. But catching them young is a very good way. What all of us can do, educate children. And already those who are into it, we need to support them. We need to provide the counseling services. There are many who have gone into that habit and they want to come out of it. They need some help. We need to support them and provide the counseling services. And very important is policy advocacy. We need to strengthen the policy. We need to collaborate with the policy makers. For example, now we have the smoke-free. Our environment, our surrounding has to be smoke-free. Are we seriously implementing that legislation? Is it that our environment is free from smoke? Can we implement this? Smoke-free surroundings? Can we be responsible in making it implement? One more example. Let us also work hard towards increasing the tax on tobacco so that there are less users. Increase the tax on tobacco. And then we need the people. People have to realize. People need to come together. Let us go to the community, mobilize them, bring them together. Collectively we can. In isolation, we can do nothing. Collectively, we can do so many things. So that's why my earnest request is we as government organizations or non-government organizations, parents, educators, students, youth, whatever may be, we need to have the networking. Our commitment is for tobacco-free world, not just because we are concerned about human health, human life. No. Yes, we have the concern, but at the same time, let us keep in mind the precious ecosystem that sustains all of us.
If the ecosystem, our mother earth, our mother nature, we do not allow her to live, how do we survive? We cannot survive without mother nature. So let us keep all these things in mind. Let me conclude by saying a few slogans so that let it be there in our minds, very strongly rooted in our minds. Choose life, choose life, say no to tobacco. Clear the smoke, clear the smoke, embrace healthy life. Breathe free, live tobacco free. Unlock your potential, be tobacco free. Thank you. Thank you so much, Vinita ma'am. Thank you so much for your wonderful session. I really liked how Vinita ma'am has not only discussed about, her topic, but also उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ हमें solutions बताए हैं कि कैसे इसके ऊपर हम काम करें, हम क्यों करें इसके ऊपर काम, and what are the alternatives that we can try. ठीक है, तो with that, we are moving to the quiz section. So Ranu, over to you. Yes, ma'am. Thank you so much. So based on Ma'am Sunita's lecture, we have the following question with us. When child labor is woven into tobacco cultivation, can you mention which two rights of the child are violated? I repeat, when child labor is woven into tobacco cultivation, can you mention which two rights of the child are violated? I hope everybody got your question, and your time starts now. Start giving your answers in the chat box, please. आप सबको two rights एक साथ लिख के भेजना है. You have to write कि कौन से दो ऐसे rights है जो हमारे चिल्ड्रन का वायलेट हो जाता है, जो बच्चों का वायलेट हो जाता है अगर हम टोबैको कल्टीवेशन में रहे. तो आप सबको दो राइट्स एक ही मैसेज पे डाल के भेजना है, अलग अलग नहीं. टुगेदर एंड द करेक्ट आंसर. एक सही होगा, एक गलत होगा तो हाफ मार्क मिलेगा, अगर फुल करेक्ट होगा तो आपको कंप्लीट मार्क मिलेगा. एंड ऑल्सो मीनवाइल आई वुड लाइक टू से, जब तक आप लोग आंसर्स टाइप कर रहे हो, जितना भी अभी तक आप लोगों को लर्निंग मिला है, एंड बहुत हमने इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखा है कि आप लोग इसको समझो ना या आप लोग बोर हो जाओ. हमने इसको छोटे छोटे सेशंस में विद ऑल दी स्पीकर्स डिवाइड किया है ताकि छोटे छोटे 5 मिनट में हमें बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिले, एंड इसीलिए जानने को मिले सो दैट आप एक one individual can go and tell it to the other 10 people, maybe your friend, maybe your family, friends के friends को, friend के घर वाले को, anyone. Just try to spread it. Okay. Time is up, ma'am. Okay. So thank you so much. Thank you, Ranu. So now we will move to the next speaker. बट ऑल्सो मैं बोल दूंगी कि अभी हमने बस आपको सवाल पूछे हैं, तो आप लोगों ने बस आंसर किया है, बट हमें अभी तक पता ही नहीं है कि सवाल सही है जो हम आपको पूछ रहे हैं, उसके जवाब जो आप चैट बॉक्स पे दे रहे हो, या ये सब सही है या गलत है. तो वो सब लास्ट में रानू आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. वी विल हैव द आंसर्स, हम आपको आंसर्स बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप राइट आंसर्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. ठीक है. सो नाउ the session thus further have been incredibly enlightening. I considered myself fortunate to be among such accomplished individuals who have contributed significantly to the society. Their collective wisdom has truly graced our webinar today, an event made possible by the support of our sponsors, NMDC. We are grateful to Bharat Petroleum, and also we are very grateful to Jai Kisan. My heartfelt thanks to all the sponsors for the championing this cause. Thank you so much.
Now I eagerly look forward to the insights and knowledge our remaining speakers will share. So without further ado, let's proceed with our program. I am pleased to pass the reins over to our Senior Program Executive, Ms. Arpita Chakraborty. Arpita, the floor is yours. Over to you. Thank you so much. Now, I would like to go ahead with our next speaker of today's program, Dr. Sandeep Jasuja. Dr. Sandeep Jasuja is the Medical Superintendent of State Cancer Institute, Professor and Head of Department of Medical Oncology and BMT at SMS Medical College and Hospital, Jaipur. He is a member of the American Society of Clinical Oncology, USA, and also a member of Bone Marrow Transplant Registry, CMC, Vellore, etc. He is also the recipient of various awards and has been part of national and international conferences. We welcome you, Dr. Sandeep, sir. I request you to please take over the session. So, very good evening, all friends and my listeners. First of all, let me give thanks to our Sanjeevani group and for doing this kind of wonderful session and this kind of awareness they are spreading in our India, and they are very much helpful. And I'm really let me congratulate Ruby ji for doing a wonderful sessions. So आज जो हमारा sessions है that is on World No Tobacco Day. वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो आज हमारी थीम है इस बार की, वो थीम है ग्रो फूड नो टोबैको। एक्चुअली क्या हुआ था अभी 2023 में WHO ने एक वो पूरा इन्वेस्टिगेशंस किए थे कि कितने लोगों को स्टारवेशन हुआ। तो 2020 सरप्राइजिंगली 340 मिलियन पीपल थे उनको स्टारवेशन हुआ आफ्टर कोविड, आफ्टर क्राइसिस हुआ। तो फिर उन्होंने एक सर्च किया कि ये क्राइसिस क्यों हुआ। ये क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम जो लैंड है वो फूड ना ग्रो करके, जो अराउंड 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड्स है जो फूड ग्रो ना करके और टोबैको को कल्टीवेट कर रहे थे फार्मर, तो उसके कारण फूड क्राइसिस हो गया और उसमें कोविड ने ऐड ऑन किया। तो आप ये देखिए, एक ऐसी चीज जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, हम उसको ग्रो करते हैं और हमारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनको इंक्रीज करते हैं, उनको हम लोग जो बीमारियां उनको बुलाने वाली जो ये जो टोबैको है या जो क्रॉप है उसको हम यूज कर रहे हैं, ना कि हम फूड को यूज करें जिसमें हमें हेल्दी हो, जिसमें हमारा स्टारवेशन नहीं हो या फिर डाइट कम हो। अभी तक मेरे सब लर्नर स्पीकर्स ने आपको बताया कि टोबैको का क्या साइड इफेक्ट है और कैसे टोबैको लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या टोबैको का कोई बेनिफिट है, सिंगल बेनिफिट एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी स्टिमुलेशन का, जो एडिक्ट हो जाते हैं पेशेंट्स? तो अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको टोबैको का कोई भी सिंगल बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमेशा उसके नुकसान ही मिलेंगे। ग्लोबल जो आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, किसी से भी पूछिए, एक सिंगल बेनिफिट बता दे तो मैं मानता हूँ। केवल एक सिंगल बेनिफिट जो फार्मर्स को लगता है वो ये है कि उनको प्रॉफिट होता है फार्मिंग से। अब अगर मान लीजिए वो टोबैको फार्मिंग करते हैं तो उनको लगता है कि टेम्परेरी उनको प्रॉफिट होता है, और जो ये टोबैको कंपनीज हैं उनका ऐसा एग्रीमेंट्स करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कि वो उससे निकल नहीं पाते और अपने डेप्थ से नहीं निकल पाते, उनका डे एंड नाइट उनको उनकी कंट्रोल में रहते हैं, उनकी जकड़ में रहते हैं, इसलिए वो आउट नहीं हो पाते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हम सब ने जैसे डिस्कस किया कि जो टोबैको है वो कई कारणों, कई बीमारियों का कारण है। अराउंड 349 मिलियन लोग जो है स्मोकिंग करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से 50% लोग एक्सपायर हो जाते हैं। उनमें 50% जो एक्सपायर होते हैं उनमें से 50% एनसीडी के कारण होते हैं। एनसीडी मीनिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें आपके हार्ट की, लंग की और कैंसर की बीमारी या फिर कहीं की जो उनसे रिलेटेड है, स्मोकिंग या टोबैको से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके कारण होता है। हमारे यहाँ पे जो कैंसर की मैं बात करूं तो 40% जो कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड होती है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो 80% जो कैंसर है वो लंग कैंसर जो है स्मोकिंग एंड टोबैको से रिलेटेड है।
एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो 100% है कैंसर जो टबैको रिलेटेड है। बाकी एनसीडी, लंग्स की, रेस्पिरेटरी डिजीज की प्रॉब्लम आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है, ये सब चीजें पेशेंट को अर्ली डेथ देती है और अर्ली लाइफ को उनकी लेती है। तो फिर जब ऐसी चीज जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है और जिसका नुकसान ही नुकसान है, और सबसे सरप्राइजिंग देखें कि आप हमारे स्टारवेशन हो रहा है फूड का, तो इसीलिए जो इस बार की थीम रखी है हमारे WHO ने, वो रखी है ग्रो द फूड नो टबैको। अब हम बात करेंगे ग्रो द फूड नो टबैको पे। तो हमें क्या करना चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम सब लोग इतना कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं कि टबैको का यूज कम होना चाहिए, टबैको को मतलब हमें डिस्करेज करना चाहिए, उनमें बैन लगना चाहिए, उन पे सब होना चाहिए, तो हम उसके रूट कॉज पे भी जाए कि वो टबैको प्रोडक्शन ही क्यों करना चाहिए, प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह अच्छी हेल्दी क्रॉप्स प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि आज पूरे वर्ल्ड में तो 1.3 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है वो टबैको के लिए यूज हो रही है। सोचिए कितनी बड़ी हेक्टेयर लैंड है जिसको हम यूज कर रहे हैं, केवल जो चीज वेस्टेज है अगर हम उसको हम कन्वर्ट करें हमारे उसमें, अगर फूड में या फिर जैसे वेजिटेबल्स को ग्रो करें वहां पे, या कैश क्रॉप्स हो गया, कैशू की क्रॉप्स होगी, तो उनमें जो बेनिफिट है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट है फार्मर्स को, वो भी ज्यादा मिलेगा। तो आप उनको ये समझा सकते हैं, अगर आपके एरिया में कहीं भी कोई ऐसे टबैको के फार्मर्स हैं, कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको आप हेल्प करें, उनको आप समझा सकते हैं। ये आपकी भी मॉरल ड्यूटी है कि उनको इन चीजों के बारे में बताएं कि कैश क्रॉप अगर आप करेंगे या फिर वेजिटेबल उगाएंगे तो आपकी बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे और आपको फाइनेंशियल इतना लॉस नहीं होगा बेशक। और ऑन अदर हैंड आप जो उनसे टबैको रिलेटेड साइड इफेक्ट है, जो आप क्रॉप की बात कर रहे हैं, जो उनकी साइड इफेक्ट है, जैसे कि आप देखें कि उनकी जो जहाँ पे टबैको यूज होता है या प्रोडक्ट होता है, तो उसकी जो फर्टिलिटी है हमारी सोइल की, वो खत्म हो जाती है, टाइम के साथ खत्म हो जाती है और कम होने लग जाती है और जमीनें बंजर हो जाती है। तो इस कारण से जब जमीनें बंजर होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट काटते हैं और जमीनों को लेते हैं। तो वो जो किसान है, एक टेम्परेरी उनको मोमेंटरी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, बट लेटर और उनकी जमीन बंजर हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं रहती है, और उसके कारण फिर फॉरेस्ट कटते जाते हैं और हमारा इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका इकोसिस्टम का जो बैलेंस बना हुआ वो खराब होने लग जाता है। जैसे जैसे फॉरेस्ट कटेंगे, आप सब जानते हैं कि अगर पेड़ों को काटोगे, अगर उसको खत्म करोगे वनों को, तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग होगी और इकोसिस्टम खराब होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, एक टबैको प्रोडक्शन भी, इकोसिस्टम खराब हो रहा है इसके कारण। और इसमें जो यूज होते हैं, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, तो वो हम जो फार्मर काम करते हैं वहां पे, उनकी स्किन में, उनके बॉडी में चले जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म होती है, उनकी लाइफ कम हो जाती है और कैंसर डेवलप हो जाता है। जो उनको बच्चों को भी डेवलप हो जाता है और उनके बच्चों को भी आदत लग जाती है। और जो ये टोबैको को यूज करते हैं या प्रोडक्ट खराब बनाते हैं, तो उनके घर वालों को भी आदत लग जाती है और वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं एडिक्शन की। तो लेटर ऑन सुनर वो भी इसी बीमारी से ही ग्रसित होती है, टोबैको रिलेटेड डिजीज से होते हैं। एक टोबैको सिकनेस डिजीज होती है, ग्रीन टोबैको सिकनेस, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल अगर अपनी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आती है, जब हम उसको प्लग करते हैं तो उसको वेजिटेबल अपनी बॉडी के साथ आती है कांटेक्ट में, तो वो अपने अंदर अब्जॉर्प्शन निकोटिन का होता है और उनको एडिक्शन होता है। एडिक्शन होता है तो वो बड़ी जल्दी, बहुत ही जल्दी अपना उसको एडिक्ट हो जाते हैं पेशेंट्स, जो भी वहाँ पे फार्म में काम करते हैं और टोबैको से एडिक्ट होता है, उनकी साइड इफेक्ट आते हैं। दूसरा, हमारे इसमें चाइल्ड लेबर का अभी डिस्कशन चल रहा था, चाइल्ड लेबर का बिल्कुल इसमें 1.3 मिलियन चाइल्ड जो है वो इसमें वर्क कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और उनके पूरे राइट वायलेशन होते हैं और उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। उनको फूड में डिप्रिवेशन भी होता है, जब आपने उनको लोगों को अंडर डेवलप कंट्रीज में फूड स्टारवेशन के कारण भी लोगों की भूख होती है। आपने कई फोटो देखी होगी गूगल पे कि अगर भूख के कारण कितने लोग मरते हैं। अगर आप अब गूगल करेंगे तो आप सरप्राइज करेंगे कि हम बहुत लकी है फिर भी तो हमें फूड मिल रहा है। अदरवाइज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हर दिन किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन तक फूड को प्रोवाइड नहीं होता है। तो फिर हमें इसकी क्या करें, फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसके रूट कॉज पे अटैक करें, इसकी फार्मिंग ही ना होते, हमारे सराउंडिंग फार्मिंग हो रही है तो उसको डिस्करेज करें, उनको हरासमेंट करें, उनको प्रमोट नहीं करें। उनको ये नहीं कहे कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, वो कहेगा कि अगर मान लो कोई फार्मर आपके पास आता है अपनी फैमिली में जो कर रहा है कि भाई मैं तो इतना पैसा कमाता हूं, तो उसको डिस्करेज करें, उसको और नहीं करने करे, अच्छा हो रहा है, आपने अच्छा कमाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, कि उन्हें डिस्करेज करें कि लेटर और सुनर आप डेप्थ में आने वाले हैं
ये अच्छी चीज नहीं है, आप इसको कैश क्रॉप में चेंज करें। और मैं चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, वो इस पे बिल्कुल फार्मिंग, जो टबैको से की फार्मिंग है उस पे स्टॉप करें सब्सिडीज देना। अगर सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी उनको उनको महंगा, उनको सब कुछ होगा, उनका कल्टीवेशन, तो उनको नेचुरली उनको फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेजर तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ट्रांसफर होगा दूसरी दूसरी क्रॉप पे, और इसको डिस्करेज होगा, और इसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कंजप्शन भी फिर कम होगा, और बीमारियां भी कम लगेंगी लोगों को, और इसके रिलेटेड डिजीज भी कम होगी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो भी आपने कैश क्रॉप है उन पे सब्सिडीज देनी थी। जो सब्सिडीज आप टबैको पे देती है गवर्नमेंट, वो सब्सिडीज आपने जो दूसरी क्रॉप्स हैं या वो फार्मर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको उसमें सब्सिडीज और ये सब दे, ताकि इसका कम से कम प्रोडक्शन हो। या मैं तो कहता हूँ इंडिया से हमें बिल्कुल प्रोडक्शन बंद करवा देना चाहिए, सब लोग मिले हम और सब एकजुट होकर काम करें, तो हम खुद पूरे इसको काफी हद तक हम इस टबैको से रिलेटेड जो डिजीजेज है, टबैको प्रोडक्शन होता है, उससे हम बच सकते हैं। एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर, स्वच्छ अपना एनवायरनमेंट हो सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फूड का काम है, अगर हम हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्शन फूड का करेंगे तो फूड अंडर डेवलपमेंट में भी जाता है, दूसरी कंट्रीज में भी जाता है। तो नेचुरली हम कितना इनडायरेक्ट डायरेक्ट हम एक लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फूड की प्रॉब्लम आ रही है, क्राइसिस हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी हेल्प कर रहे हैं, और एक हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि हम एक गलत काम में अपनी जो क्रॉप या अपनी अपनी जो लैंड है या अपनी एनर्जी गलत कामों में लगा के हम लोगों का नुकसान नहीं करो, और पूरे वर्ल्ड का हम ध्यान रखें। तो मैं यही कहूंगा कि से नो टू टबैको, से यस टू फूड। तो आप अच्छा हेल्दी फूड करें, अपना अच्छा हेल्दी फूड ले, हेल्दी डाइट ले, स्मोकिंग टबैको से दूर रहें, और ये जितनी भी टबैको रिलेटेड डिजीज हैं इन सबसे बचें। और अपने आसपास जो इसको यूज करते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर जो इनका कंजप्शन करते हैं, उनको डिस्करेज करें, उनको हतोत्साहित करें, उनको प्रमोट नहीं करें। जैसे बच्चे भी होते हैं, स्कूलों में भी एक फैशन है, एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, तो उनको भी डिस्करेज करें कि ये तुम्हारे लिए अच्छा बात नहीं है, इससे दूर रहे, उतना ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your valuable words. I hope आप सबने सर का सेशन अच्छे से सुना होगा कि उनका नेक्स्ट जो Lecture is, what are the harmful effects of tobacco cultivation? I repeat, what are the harmful effects of tobacco cultivation? You all can start giving your answers. Your time starts now. Hurry up, last 10 seconds. Last 5 seconds. Stop. Time up. Yes, so now we can move to our next speaker, please. now I would like to request
Yes, so now I would like to request Dr. Rita Kalra to please come and address the participants. So before that, I would like to give an introduction about her. Dr. Rita Kalra is ACMS Class 1 officer, currently posted as Senior Medical Officer, Quality Nodal Officer, and in charge Hospital Administration at Civil Hospital, Panchkula. As in charge administration and nodal officer during COVID pandemic, she has worked tirelessly and with a brave heart so that all the patients are monitored and provided best amenities while in hospital isolation. Being a social activist advocating change, she believes in the givers gain whatever goes around comes around. She has pioneered several women-centric initiatives for empowerment, such as Project Astha for HPV vaccination, Hunar for vocational skilling in home care nursing, Saksham for microloans, Project Ma for nutrition of pregnant mothers, etc. She has been decorated with prestigious award for her professional achievements. Dear Rita ma'am, we are very proud to have you here with us. Over to you. And I could see that ma'am was answering to all the questions, so there will be a special prize for you too, ma'am. Thank you. So my screen is visible? Yes, ma'am, it is. Okay. So good evening, distinguished speakers, virtual delegates. Thank you for giving me this honor and opportunity to be with you all. I'm here, Dil Se, Sanson Ke Liye, to give voice to World No Tobacco Day campaign, which aims to spread awareness about the risk of tobacco use and how we can make world tobacco free, thus achieving reduction in death and disease due to tobacco consumption. The single most important thing I want to share with you all today is the scale of human and economic tragedy that tobacco imposes is shocking. The tobacco epidemic is becoming one of the biggest public health threats the world has ever faced, killing more than 8 million people a year around the world, which is like 3 times of total COVID deaths which happened during the last 3 years. More than 7 million of these are because of direct tobacco use, while 1.2 million are a result of non-smokers being exposed to second-hand smoke. Have you ever wondered how tobacco industry has damaged the environment besides decreasing productivity and escalating cost of healthcare, leading to impoverishment and poverty? Have you ever wondered why tobacco users have doubled amongst women in last 7 years? Have you ever wondered why only 4% of them attempt to quit tobacco and succeed, and why tobacco is highly addictive, and what is the happy chemical in tobacco? So, as my speakers earlier have told, the smokeless tobacco use or cigarette smoking produces nicotine, which is actually a carcinogen, and it affects the DNA, causing mutation, and which in turn causes cancer. So I will be focusing more on the diseases tobacco causes, especially cancer in women. So most of the women who smoke are at high risk to chronic diseases such as cardiovascular disease, heart attack, and stroke, cancer of not only lung, larynx, oral cavity, and esophagus, colon, which have a direct effect because of smoke, but also indirectly it causes breast cancer, cervical cancer, ovarian cancer. And as already told by Dr. Sanjeev, NCD like chronic bronchitis, asthma, emphysema, COPD is also seen among women due to tobacco use. Diabetes and osteoporosis are also in the list. So focusing on women-centric cancer, the common cancers which happen because of tobacco use are breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, uterine cancer, and lung cancer. So if we talk of breast cancer, so the risk factors are like females are at same risk as men
age after 40, the risk increases. If a woman does not have children, the risk will go on increasing. Then 5 to 10% cases are hereditary, that is genetic cause, which causes cancer, early menarche, late menopause, not breastfeeding, and being a primary or delivering at first child at 35 years. All these cause are the risk factors which can cause breast cancer among women. Even obesity, lack of exercise, eating lot of processed and fatty foods, using hormone for birth control, and replacement therapy for menopause, exposure to radiation, all these factors can cause breast cancer. And cervical cancer usually manifests as unusual vaginal bleeding, vaginal discharge, pain during sex, low back pain, leg swelling, constipation, and is again a reason for tobacco is a reason for cervical cancer. Colorectal cancer, the risk factors are bowel isn't empty, abdominal discomfort, fever, fatigue, loss of appetite, unexplained weight loss, diarrhea, constipation, blood in your stools. All these are the symptoms for colorectal cancer, and we can prevent not only by stopping alcohol, adding fruits, vegetables, exercise, but most important is stopping smoking. Then uterine cancer again is manifest because of tobacco intake. So it manifests as heavy periods, pelvic lump, abnormal vaginal bleeding, change of bowel habits, difficulty in urination, and pain during sexual intercourse. So these are some of the symptoms how uterine cancer manifests. And lung cancer, which is a direct cancer because of tobacco intake, it manifests as persistent cough, repeated chest infections, clubbing of fingers, unexplained weight loss, breathlessness, chest or shoulder pain, unexplained tiredness, coughing up blood, change in long-term cough, and hoarseness of voice. So how to prevent these cancers? There are modifiable risk factors and non-modifiable risk factors. So for these cancers, age is non-modifiable. As one grows elder, the risk increases. Then genetically, if you have inherited the genes, mutated genes such as BRCA1 and BRCA2, you're at a very high risk of getting these cancers. So the modifiable risk factor tried includes weight balance, physical activity, and diet. Of course, inhibiting or stopping smoking and alcohol. So these factors, you can lose weight, control your diet, and with persistent physical activity, you can prevent cancer. Ma'am, can I just pitch in? Ma'am, the slides are not being changed. It is in the first slide only. But like I have been changing. Okay. So ma'am, can you just stop sharing and again try once? Okay. Yes. Yeah, I thought it's changing. Yes. Share. So can you see now? Yes, ma'am, I can see the screen. Can you go to the next slide, ma'am? So should I do it this way? This is better? Yes, this is better. So we'll do it like this because, so I'm sorry. But, it's okay, ma'am, no problem. So we'll just push forward. These are all the symptoms: colorectal cancer, uterine cancer, lung cancer. Then non-modifiable risk factors are age and genes. Modifiable are weight, diet, physical activity. You can see now, no? Yes, ma'am, we can. Okay. So now I was here only. So primary prevention, how to prevent these cancers from happening. So we have lots of research in this field, and we have options of chemo prevention,
behavioral change, prophylactic surgery, and screening. So we'll talk about this because secondary prevention and all, it's a part of management and we need not discuss it here. So chemo prevention, latest research says that use of drugs, vitamins or other agents to try to reduce the risk or delay the development of recurrence of cancer. They include beta carotene, vitamin A, and aspirin for colorectal cancer has also been recommended. And with behavior change, how you can prevent cancer is, I talked about the triage of weight, diet, and physical activity. So if you are taking regular walks of 25 minutes in the morning and 25 in the evening, which might include yoga, meditation, so that increases your immunity and reduces the chance of cancer. Similarly, obesity. So weight management is very important. So if you have a good BMR, body mass index, so then the chances are low. So diet plays a very important role in managing the weight, and so is the physical activity. Other thing, diet is a separate chapter. Some people have talked about it. And I would like to suggest that reducing alcohol use, not smoking will definitely help to prevent exposure to these carcinogens and prevent cancer. Immunization against hepatitis B virus and human papilloma virus for cervical cancer can also protect and save lives. Sexual practices to be safe to avoid cancer genesis. So cancer screening, just a list of mammogram, which has to be done right starting from 35 years of age, colorectal cancer screening, lung cancer screening, which includes CT, MRI, pap smear, which is the cheapest and best method for cervical cancer, and then oral cancer screening technology is available. And depending upon the age and history, family history, environmental history, the frequency can be scheduled by your doctor. So the cancer control continuum includes prevention like tobacco control, diet, physical activity, alcohol, no use, chemo prevention, to detection such as pap test, mammography, sigmoidoscopy, then focusing on diagnosis by informed decision making, finally treatment at the tertiary care centers and aftercare. So World Tobacco Day and gender and tobacco have become important because I told you in last 7 years, the number of tobacco users amongst women have doubled. So as change makers and social influencers, we are here to engage and empower our audience on quitting the widely abused substance, which is not only addictive, but lethal to life. By lending voice to gender and tobacco campaign, we need to set an exemplary paradigm by not accepting things we cannot change. In fact, we will pledge to change things we cannot accept. The easy way out is never to start. So try and encourage young people, especially women around you, to avoid the habit altogether and mobilize them to save the generation from a hazy future. To conclude, I would like to dedicate these few lines to the champions out there. खुद से जीतने की जिद है हमें, खुद से जीतने की जिद है हमें, खुद को ही हराना है, हमें हम में भीड़ नहीं है दुनिया की, हम में एक जमाना है. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am, for sharing such wonderful information with us. And जितना मुझे समझ में आया है कि we have to be self-determined. सेल्फ डिटर्मिनेशन खुद से आना चाहिए. एंड जो भी इंफॉर्मेशन आज आपने हम लोगों के साथ शेयर किया है, दैट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. एंड आई होप आवर पार्टिसिपेंट्स हैव लिसन टू व्हाट मैम हैज सेड सो फार. सो आई वुड रिक्वेस्ट रानू टू प्लीज गो अहेड विद द क्विज. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sumki, ma'am. Yeah. So based on Dr. Rita Kalra's speech and lecture, we have the following question.
Which of the substances found in cigarette smoke contain carcinogen? Our options are, ma'am, can we have the options also? So should I tell? Yes, ma'am, we have the options. So the options are tar, nicotine, carbon monoxide. Which of these is a carcinogen? Yeah, these are the options: nicotine, tar, and carbon monoxide. And your time starts now. Just a reminder, please hurry up. You all have last 10 seconds left with your last 5 seconds. Time up. थैंक यू सो मच रानू. आई होप आपको करेक्ट आंसर्स बहुत मिले होंगे. नाउ लेट अस मूव अहेड विथ आवर नेक्स्ट स्पीकर. So our next speaker is Dr. Shankar Lal Jakhar. Dr. Shankar Lal Jakhar is professor and unit head in radiation oncology, Acharya Tulsi Regional Cancer Treatment and Research Institute, Bikaner. He is a member of AROI, ICRO, ESMO. He has worked as a nodal officer oxygen during second wave of COVID, and oxygen management model became famous all over India. His area of interest is to work on cancer prevention, education to students for lifestyle, early detection by mass communication and camps. He has more than 100 paper publications in various national and international journals and working as principal investigator in many trials. We welcome you, sir. Over to you, sir. नमस्कार. आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर. मेरा टॉपिक है कि हर दिन को हम कैंसर निषेध तंबाकू निषेध दिवस माने. अच्छा, हमने सारी बातें अभी जो जितने स्पीकर बोल रहे हैं लगभग तंबाकू से संबंधित बातें कर ली. हर दिन को हम तंबाकू निषेध दिवस कैसे माने? हमें किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो युवा जनरेशन है उनके अंदर तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में बताना और उससे दूर रहने की सलाह देना और उसके दिमाग में ये बिठाना कि इससे दूर रहना है, ये करना है. अब साल में एक दिन जैसे ये प्रोग्राम होता है और सारी जगह ये प्रोग्राम एक साथ होते हैं, वाइड स्प्रेड इसका सब जगह ब्रॉडकास्ट होता है, तो लोगों के फर्क पड़ता है. कुछ एक लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें रोजाना इसके बारे में कुछ न कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा. मैं ये मानता हूं कि सबसे जो मेन कड़ी है इसमें जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाले टाइम में समाज के मुख्य अंग होंगे, तो स्कूलों के अंदर अगर प्रार्थना सभा होती है, जो प्रेयर सभा होती है, उसमें रोज तंबाकू के बारे में एक या दो चीजें बताई जाए या उनके नुकसान के बारे में बताया जाए. सेकंड है कि जितनी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग कहीं भी अगर
एज ए कैंसर विशेषज्ञ कोई बुलाए या किसी भी सभा में बोलने का मौका मिले तो हमें तंबाकू के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कैंसर का जितना स्कोप है उसमें इंडिया में कैंसर का जो तंबाकू रिलेटेड बहुत ज्यादा है। जैसे हेड एंड नेक 25% पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, तो ये बहुत बड़ी एक मात्रा है। तीसरी चीज है कि जो हमारे मित्र है, परिजन है, उनको एनकरेजमेंट करें कि हम तंबाकू को छोड़ें और दूसरे लोगों को भी छुड़ाएं। अब होता क्या है कि कुछ हम अगर वॉलंटियर डेवलप कर दें या जो समाज सेवा का जज्बा रखते हैं या वो चाहते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो हम लोग उनको अगर तैयार करें तंबाकू के दुष्प्रभाव और उनके बारे में बताएं, और वो जगह जगह जहां भी बैठे लोगों के बीच में बात करें तो तंबाकू के नेगेटिव इफेक्ट बताएं, इनके जो वजह से परिवार का नुकसान होता है या परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होती है उनके बारे में बताएं, तो लोगों में जरूर इसके प्रति नफरत हो और दूर हो। ये रोज का काम होता रहे अगर वॉलंटियर डेवलप होते हैं तो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वैसे सिंपल कोई संस्था हो या कोई और हो। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें हम एक चीज ऐड कर दें कि भाई जब भी आपको सिगरेट की इच्छा होती है, क्योंकि अभी जैसे पहले मैडम ने बताया था कि ये उनकी खुद की ऐसे होने लग जाती है कि मुझे सिगरेट पीनी है, थोड़ी थ्रिल आ जाए, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं भाई 2 कस सिगरेट के लगे इसकी बजाय तो 2 गहरी सांस ले ले और रिलैक्स हो जाए। योगा या मेडिटेशन की तरह, मतलब 2 गहरे सांस ले लो आप, उसके बराबर आपको एनकरेजमेंट मिल जाएगा। अब हम अगर पोस्टर की बात करें कि भाई पोस्टर, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है या सार्वजनिक स्थल है, वहां पे तंबाकू जनित बीमारियों के बारे में और तंबाकू के बारे में पोस्टर्स लगने चाहिए, जिससे लोगों में भी अवेयरनेस हो। कई बार ऐसे होता है कि बार बार कोई चीज देखी जाती है तो उसके प्रति जागरूकता बढ़ती है, तो कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। अच्छा, जो लोग खेती कर रहे हैं उनको भी इस चीज के बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप लोग जैसे खेती कर रहे हो तो इससे इतने लोगों का नुकसान हो रहा है, इतने लोगों के फैमिली बर्बाद हो रही है, जाने जा रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। कुछ जो दुकानदार है, जैसे शराब की दुकान है लिमिटेड है, ऐसे ही तंबाकू की सेल वाली दुकानें भी अगर लिमिटेड की जाए कि हर दुकान पे तंबाकू नहीं मिले, जैसे अभी ये किया हुआ है कि हॉस्पिटल के नजदीक, स्कूलों के नजदीक तंबाकू की बिक्री नहीं होती। अगर ये संस्थाएं गवर्नमेंट को ये लिख के दें कि भाई ये जो दुकानें हैं तंबाकू बिक्री की, ये भी लिमिटेड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड रहे। टैक्सेशन की वो बात तो सारे करते ही है, फिर भी टैक्सेशन बढ़ाने से भी अगर इजीली अवेलेबल होगी तो लोग पिएंगे और नशा बढ़ता रहेगा। अगर सामाजिक स्तर पे जैसे पंचायत है, जैसे पंचों के फैसले आते हैं भाई शराबबंदी करते हैं और करते हैं, इसी तरह से अगर इसका भी एनकरेजमेंट किया जाए कि तंबाकू का जो यूज है इसकी वजह से जो कैंसर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसको दूर किया जाए। और मैं ये कह रहा हूँ जो दुकानदार बेचते हैं तंबाकू को, उनमें भी अगर ये भावना आ जाए कि मेरे तंबाकू बेचने से जो युवा, जो बच्चे, महिलाएं जैसे गुटखा बहुत खाती है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अगर मैं नहीं रखूं, जैसे गांव में 1 या 2 दुकान होती है, अगर वो नहीं रखे तो उनके खाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, शहर जाके उनको कोई नहीं ला के देगा। अभी क्या होता है कि जब आदमी बाहर काम पे चला जाता है, लेडीज बच्चे को भेज देती है, जा गुटखा लेके आ जा, 2-4 दाने उस बच्चे को दे देते हैं, बाकी खुद खा लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, गाँव में गुटखे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कि मैंने सोशल मीडिया पे डाला था 5-6 साल पहले, ये डालता रहता हूँ मैं, और वैसे यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता रहता हूँ, तो उसमें कई सारे लोगों के अलग अलग कमेंट आए थे। उसमें मेरे भाई ने भी पढ़े तो उनको कई कमेंट ऐसे पसंद आए। उसके होलसेल जनरल स्टोर है, %40 रेवेन्यू जो जनरेशन होता था इसकी वजह से था, वो बंद हुआ। तो एक बार तो मुझे ही लगा
कि ये गलत कर दिया, लेकिन मैं मेरे चीज पे स्ट्रिक्ट रहा और आज 5 साल हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत फैसला लिया। मेरा वापस दूसरी चीजों से अच्छा चलने लग गया और लोग भी ये कहने लगे ये अच्छा कदम उठाया। तो कई दुकानदारों ने और ने भी जो गांव में बेचते थे उन्होंने कम की। तो ये बहुत बड़ी एक शुरुआत है। इस तरह से अगर किया जाए तो रोज हम तंबाकू निषेध दिवस को मान के अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम सक्सेस होंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो सबसे बड़ी बात जो आपने अवेयरनेस जागरूकता के बारे में बोला, स्कूल कॉलेजों में जो पोस्टर वगैरह के बारे में बोला, वो बहुत ही ज्यादा एक माइंड चेंजिंग इनिशिएटिव रहेगा अगर हर एक स्कूल कॉलेजेस में, प्रेयर हॉल्स में ये सारी इंफॉर्मेशन अगर डेली दिया जाए तो जरूर माइंडसेट चेंज जरूर होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट रानू to kindly take over the quiz. Thank you, ma'am. Yeah. So, जो भी अभी सर ने बताया उसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन है, बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है, I would like to say, and the question is, what are some strategies to make every day a no tobacco day? I repeat, what are some strategies to make every day a no tobacco day? And your time starts now. There are lots of brainstorming also happening. हमें और भी बहुत सारे strategies के बारे में पता चल रहा है. So we should actually note down. Right, Ranu? Last 5 seconds. Yes, ma'am. Like lots and lots. I'm so sorry. Time's up, everybody. Yeah, stop answering. Time's up. But like this question is so open-ended. Like we were getting like so many responses and all were very meaningful. So thank you so much, everybody. Yeah. Thank you so much, Ranu. But one thing that I would like to add is, practice makes a man perfect. अगर आप चाहोगे, हमें सर ने बताया, मैम ने बताया, जितने भी स्पीकर्स आए हैं आज, सब लोगों ने हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की. सो यस, वो प्रैक्टिस, डेडिकेशन हमारी तरफ से होना चाहिए. Okay, without more delay, I would like to invite our next speaker, Dr. Rajdeep Guha. Dr. Rajdeep Guha is a specialist grade 1 officer in the Department of Head and Neck Oncology at CNCI. He has over 15 years of experience in this field. His area of interest is prevention, detection, and treatment of head and neck cancer, along with training of juniors to tackle this problem. He has avid interest in head and neck reconstruction and rehabilitation. He has active interest in cancer awareness and tobacco cessation. I would like to welcome Rajdeep sir. Good evening, everyone. It's lovely evening, and I'm really amazed with the responses that people are writing. Actually, Ranu, I was looking for the last जो question था ना, जिसमें strategies के बारे में था, तो मैं वो देख रहा था, responses पढ़ रहा था, and it really is amazing how people are analyzing the problem and they're giving solutions which are really very useful. And but then सुमद्रिता जैसे बोली कि strategies तो बहुत सारे हैं, पर उनको अमल में लाना यहीं पे सारा काम है, यहीं पे सारा खेला शुरू होता है. तो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बोल लूं. मैं एक रीजनल कैंसर सेंटर में काम करता हूं और मेरा दिन का काम है
कि मैं लोगों के मुंह जबड़े के कैंसर काट के फेंक के निकाल रहा हूँ, ये मेरा काम है। और ये बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ओरल कैंसर्स हमारे ही देश में होते हैं, और ये भी कि ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का इस्तेमाल। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है हाउ टू क्विट टोबैको। भाई टोबैको तो है, छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़े। तो मैं ये देखा हूँ कि पेशेंट लोग जब मेरे पास में आते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि आप टोबैको लेते हैं, तो उनका आंसर होता है कि सर छोड़ दिए। कब छोड़े? जब कैंसर का बीमारी के बारे में जाने पहचाने, भाई कुछ हुआ है, उस टाइम पे छोड़ दिए। इसका मतलब है कि कोई धक्का लगता है टोबैको छोड़ने के लिए। साइकोलॉजिकली हम लोग इतना डिपेंडेंट होते हैं इस टोबैको के ऊपर कि कुछ एक हादसा होना होता है, तब जाके हम टोबैको छोड़ते हैं। तो ये ये तरीका है, सही है, बट ये भी आपको मानना पड़ेगा कि करीबन 30% पेशेंट लोग ये बीमारी ठीक होने के बाद में, जैसे कि रेडिएशन हो, सर्जरी हो, जो भी है, सब होने के बाद में 30% पेशेंट लोग दोबारा से वापस टोबैको शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे डोपामिन का एक्शन काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टोबैको ले रहे हैं, ब्रेन में डोपामिन चल रहा है, डोपामिन की तलब हो रही है, तब मैं जाके टोबैको वापस ले रहा हूँ। उस टाइम पे ये लोग दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बस लेने का इरादा है, आसानी से मिल जाता है। दिस इज व्हाट द एंटायर स्ट्रेटेजी फॉर क्विटिंग टोबैको, जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि लेट अस कंसीडर एज टोबैको एज अ डिजीज एंड टोबैको पेशेंट्स, टोबैको यूजर्स एज पेशेंट्स। तो अगर हम ये मान लेते हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर सोचे, तो द थिंग इज दैट अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर लोग हैं, सोशल वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, दे शुड सी टोबैको यूजेज एज अ डिजीज। तो गांव गांव में जैसे आंगनवाड़ी वर्कर लोग घर घर में जाकर के पूछते हैं कि बच्चे को बीमारी है, पल्स पोलियो वगैरह का जो प्रोग्राम जो चलाते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर जा करके घर घर में जाकर के ये अवेयरनेस जताया जाए कि आप टोबैको लेते हैं, आपको बीमारी हो सकता है, टोबैको छोड़ने के लिए आपको क्या साजो सामान चाहिए, हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स विच कैन रियली हेल्प विद टोबैको। हर अस्पताल में मेरे ख्याल से, चाहे वो कैंसर अस्पताल हो, चाहे वो जनरल अस्पताल हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी का अस्पताल हो, चाहे वो पेट की बीमारी का अस्पताल हो, इन जगहों पे एक टोबैको सीजेशन सेंटर ये खुलना चाहिए, ताकि और उसमें इंसान बैठना भी चाहिए और उसको नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर का साइन बोर्ड लगा दिया और बस उसमें कुछ और ही काम हो रहा है। मैन पावर इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं पे खेला है कि ट्रेंड मैन पावर ये हर अस्पताल में देना ये बहुत मुश्किल काम है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जहाँ पे भी ये सेंटर्स हो, वहाँ पे जैसे ही पेशेंट आएगा, चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो जिसमें टोबैको का यूजेज हो, या कोई हार्ट का पेशेंट हो जिसमें टोबैको का यूजेज देखा जा रहा हो, इनको इन सेंटर्स में भेज दिया जाए, और कुछ नहीं तो भेज दिया जाए, सो दैट दीज पेशेंट्स दे कैन गेट एन आइडिया कि मैं तंबाकू को कैसे रोकूं। सिर्फ पेशेंट नहीं, तो पेशेंट के साथ में आने वाले जो लोग होते हैं, कई टाइम पे उनके साथ में माँ, भाई, बहन, ये लोग आते हैं, और उनके दूसरे जो रिलेटिव्स है ये लोग भी आते हैं। उसमें से कई लोग हैं जो टोबैको के यूजर्स होते हैं। दे ऑल्सो नो कि भाई तंबाकू लेने से खतरा है, बीमारी का खतरा तो है, बट कैसे छोड़े ये पता नहीं। तो इन टोबैको सिचुएशन सेंटर्स में दे कैन गेट एन आइडिया, गेट ट्रेनिंग, जरूरत पड़ने पे दवाई, जैसे कि हमारे यहाँ एंटी टोबैको टैबलेट्स मिलते हैं, बुप्रेनॉर्फिन, बुप्रोपियोन नाम के टैबलेट्स है। दे आर एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट्स, ये आसानी से मिल जाते हैं। ये लेने से टोबैको लेने की या स्मोक करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। कई टाइम पे निकोटिन पैचेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो तलब है सिगरेट या टोबैको लेने की जो तलब है वो कम हो जाए। So these are very important things which practically will help to quit tobacco. कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज है जो गुप्ता गोयल इन्होंने एक पेपर में 2022 में एक उनका पेपर आया था, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था, और बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल। जैसे आजकल होता है कि स्मार्ट कार्ड में पैसा डाल दो, पेट्रोल पंप में जाओ, स्मार्ट कार्ड में जितना पैसा है उसका इस्तेमाल करके आप पेट्रोल खरीद सकते हो। ठीक उसी तरीके से एक स्मार्ट कार्ड होगा, जो भी सिगरेट तंबाकू वगैरह लेना चाहता है उसको पहले एक स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा, प्रीपेड कार्ड की तरह। उसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा भर ही नहीं सकते हो, एक साल में आप से 5,000 रुपए का पैसा भर सकते हो।
और इसको लेकर के वो जब जाएगा तभी और सिर्फ तभी उसको टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो लिमिटेड पैसा है, आप चाहिए तो एक बार में खर्च करो, आप उसको साल भर चलाओ, तो उतने में ही आपको सीमित रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली टोबैको का यूज जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है कि जैसे कि क्या बेनिफिट्स है ये टोबैको छोड़ने के, ये बताया जाए। जैसे कि समझो टोबैको छोड़ेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, टोबैको छोड़ेंगे तो आपको पेंशन में 5,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर ऐसा कुछ लिंक कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा सा इंसेंटिव होगा टोबैको छोड़ने के लिए। ये क्विटिंग टोबैको के लिए ये गवर्नमेंट का एक खास इंसेंटिव हो सकता है कि भाई जो अगर स्मोक कर रहा होगा और वो स्मोक इतने दिनों के अंदर में 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक म्याद के अंदर में अगर वो छोड़ देगा, उसको एक स्पेशल प्रमोशन मिलेगा या एक कहीं घूमने जाने के लिए एक टूर का पैसा मिलेगा। दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया टू हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग। जैसे कि मेरे पिछले स्पीकर ने बताया कि एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल होगा। ऑलरेडी कॉटपा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट 203 का 2023 का जो एक्ट है, 2003 का जो एक्ट है, उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल है। जैसे कि आप सिगरेट लूज सेल नहीं कर सकते। आप अब सिगरेट को अगर एक सिगरेट या 2 सिगरेट नहीं ले सकते, आपको लेना है तो आपको पूरा एक सिगरेट पैकेट लेना पड़ेगा। तो बट आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो हर गली कूचे में जो सिगरेट सेल का जो दुकान है वो वेरी इजीली सिंगल सिगरेट, 2 सिगरेट ये दे रहा है। तो ये एक्ट जो है, इसको एक्ट से बात नहीं बनती, एक्ट तो पेपर में है, उसको एक्चुअली लागू करना, यानी वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो वहां पे जाके कभी कभी चाहिए तो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गुप्त एज अ खरीदार कस्टमर जाके उसको पूछेगा कि भाई 2 सिगरेट दो, और अगर वो दे देता है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि भाई आपको पता है कि एक्ट है, आपको पता है कि लूज सिगरेट सेल अलाउड नहीं है, यू हैव स्टिल डन दिस, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। एक बार पनिशमेंट वार्निंग, सेकंड बार पनिशमेंट फाइन, 30 बार पनिशमेंट लाइसेंस कैंसिल कर दो। ऐसे कुछ एक डिग्री ऑफ अगर पनिशमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेल का जो है वो रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन शुरू होने से ऑटोमेटिकली ये सिगरेट छोड़ने का जो प्रक्रिया है ये काफी हद तक असरदार हो जाएगा। लास्ट है कि रिमाइंडर्स। आपने सिगरेट खरीदा, आपने तंबाकू का प्रोडक्ट खरीदा, आपको एक फोन नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग आजकल हर जगह पे होता है कि जूता खरीदने जाओ तो फोन नंबर मांगते हैं, आप कपड़े खरीदने जाओ फोन नंबर मांगते हैं। वहां से क्या होता है कि वो एसएमएस भेजते हैं कि अगला वाला जो आपका सेल है उसमें आपको ये % छूट दिया जाएगा। आपने तो ठीक वैसे ही हर टोबैको सेल प्रोडक्ट जो एरिया जहाँ पे सेल टोबैको प्रोडक्ट सेल होता है वहां पे आपको फोन नंबर देना पड़ेगा कंपल्सरीली। और अब इस फोन नंबर पे गवर्नमेंट से या कोई सोशल वर्कर, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैसेज भेजेगा विद द स्पेसिफिक कि आपने यहाँ पे अपने इतने चीजें ये जो खरीदे हैं, आप प्लीज आने वाले दिनों में आपको ये खतरा है, आप प्लीज सिगरेट छोड़ दीजिए। इसके लिए चाहिए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो एआई जो है, चैट जीपीटी के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं, तो इसका काफी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी असरदार हो सकता है। तो कुछ सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमको टोबैको छोड़ने में मदद करेगा। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होता है इन सबको अमल में लाने के लिए। और इसी के साथ में मैं आज का जो है ये मेरा सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ग्रेट वर्क, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजदीप सर। आपने जो भी आज नई नई चीजें बताई है, दैट इज रियली वेरी न्यू फॉर मी एज वेल। हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड यस, जितना मुझे समझ में आया है कि द लॉ एंड ऑर्डर शुड हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि नॉट ओनली ऑडियो विजुअल या फिर आप सिगरेट मत खाओ हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट में पिक्चर्स देने से नहीं होता है। वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर ऑर्डर ताकि हम इस चीज को रोक सके एंड फ्यूचर जनरेशन को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को हम बचा सके। सो रियली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग सच वैल्यूएबल knowledge with us today. Thank you. Now I would request Ranu to kindly take over the quiz. Yes, ma'am. Thank you so much. Sumki, ma'am. Okay, so the question is, which cancer is preventable?
oral cancer, breast cancer, ovarian cancer, blood cancer. These are the options. आप please अपना answers डालें. Which cancer is preventable? Oral cancer, breast cancer, ovarian cancer, or blood cancer? Come watch from life people. Yes. So we are closing this question. Yes. Now we can move to the next speaker, please. Rajdeep sir, can you see the answers in the chat box? I hope बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है and they have given बहुत सारे लोगों ने correct answers भी डाले हैं यहाँ पे. Yes. Okay, Arpita, please. Yes. So now let me invite our next speaker for today's event, Dr. Rupa Vishwas. Dr. Rupa Vishwas has done her PhD in social work, working as assistant professor at St. Xavier's University, Kolkata since July 2018, worked as assistant professor from March 6th, 2017 to July 1st, 2018 in the Department of Social Work, Law College, Durgapur. Worked as visiting faculty from January 24th, 2018 to May 31st, 2019 in the Department of Humanities and Social Sciences, NIT, Durgapur. Worked as visiting faculty from November 1st, 2011 to December 31st, 2016 in the School of Professional Studies, Netaji Subhash Open University, Kolkata. She has more than 100 paper publications in various national and international journals. We welcome you, Dr. Rupa ma'am. Ma'am, please take over the session. Rupa ma'am, can you? मैंने co-host बना दिया है. Can you please again try? Yes, ma'am, you are. Ma'am, your voice is lagging. I think ma'am is having some network issues. Yes, most probably. Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Good evening, everyone. It's a pleasure to be sitting with such a learned speakers. First of all, I would like to express my gratitude to Sanjeevani for organizing this event. Today, we gather here to observe World No Tobacco Day. Ma'am, I would just like to interfere.
मैम आपकी आवाज है ना वो बहुत ब्रेक हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई स्विचिंग ऑफ द वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, सो दैट इट विल बी इजियर. Now, is it, am I audible? Yes, ma'am, you are. Yes, it is much better. A day dedicated to raising awareness about harmful effects of tobacco and promoting a tobacco-free lifestyle. This is a day when we come together as a global community to unite against the tobacco epidemic that continues in our society. Tobacco use is one of the greatest health challenges. It takes a devastating toll on individuals, their families, and of course, communities. Well, millions of lives are lost prematurely due to tobacco-related diseases. Behind this staggering statistics lie personal stories of suffering, heartbreak, and loss. It is time to stand up and say no more. The theme for previous years, World No Tobacco Day, was a powerful one for me to tweet. It serves as a reminder that quitting tobacco is not only important but essential for our health and well-being. We must recognize tobacco addiction is a complex social issue. Hello? Ma'am, sorry for interruption. Sorry for interruption, but your voice is breaking. We are not able to hear properly. Okay. I'll have to try from some other device. Now it is clear, ma'am. Now it is clear. Now it is clear. Yeah, yes. Yes, now it is better. We must recognize that tobacco addiction is a complex issue, and quitting, of course, is not easy. However, it is a journey worth embarking, and with the right step and decision, it can be achieved. Quitting tobacco is not just a personal victory; it is a triumph for our families, our communities, and future generations. Hello? Yes, ma'am. Sorry for interruption again, but your voice is not audible. It's breaking in between, actually. Wait, I'm trying to join from some other device. Yes, ma'am. Ma'am, you can right, meanwhile try, and then we can take the other speaker. Ma'am, you can try connecting from a different device. Okay, ma'am? Yeah. Arpita, can we move to the next speaker, please? Yes. So now let us invite Dr. Supraja. Dr. Supraja is an assistant professor of psychiatric social work at the Department of Psychiatry, Kasturba Medical College, Mahe. She completed a master's degree in social work from the Madras School of Social Work and MPhil and PhD in psychiatric social work from NIMHANS. She currently works in the field of addiction medicine, formulating interventions for persons with addiction and their families. Her other fields of interest include women's mental health, public health, and research ethics. And she holds 2 active international research grants as a collaborator in these areas of work. We welcome you, Dr. Supraja, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you for that. I was not able to unmute myself. Yes, ma'am. So a very good evening to everyone who's here, and I think appreciative of the patience of everybody who's been here, I think, for the past 2 hours and listening to the sessions that are going through. So I think we have gone through various micro topics in the area of tobacco and its relation to several areas from our previous speakers, which are very enlightening for all of us. And I would like to specifically focus today in the area of, let's say, tobacco and development. Okay.
So when we say tobacco and development, let's first see what we mean by the term development, because it's a very general term and it can mean a lot of things to different people, right? So our general understanding of development when we speak in a public context is primarily about economic development, right? So when we talk about national development or the development of the country, we are predominantly talking about economic development, the growth of the country. Right? But it's also important in a context like it's a multi-pronged concept, like issues related to tobacco. We need to have a slightly broadened view of what development means, because apart from economic development, which is definitely impaired by this epidemic of, let's say, tobacco use and in our country. Other areas, major areas which I would like to touch upon as we are discussing this topic is that major impacts that it has on health, right? Many of our speakers today have covered about the impacts of tobacco on health, on mental health, right? How tobacco use and availability and control can actually impact human development. So let's say human beings as a generation, when a new child gets into the world, how does availability of tobacco or use of tobacco by the parents, how does it impact even early development for children? So that's another area which is important for long-term sustained eradication of tobacco misuse in the country. Then how does tobacco impact human rights? Right? How does it impair the rights of certain groups of people? And various other non-economic domains which are also impacted due to tobacco. So we look at some of these briefly. Many of these have been covered by our previous speakers, so I'd probably touch upon their points, which has been very helpful to have been covered before my talk today. Right. Okay, so to get a more holistic understanding of where this is coming from, right? So we're talking about tobacco use in India, and to understand that this is an epidemic, not just in India, but globally in various countries. The advantage that we have here is we already have certain norms, certain laws, and we're trying to lobby for more laws, more stringent laws that can, strengthen our systems, health system, public systems to help people come out of addiction and restrict people getting into more addictions related to tobacco. So globally, if we see in the context of that, because it's a global epidemic, right? WHO, which is the Global Health Organization, the World Health Organization, has come up with Sustainable Development Goals. And one of our previous speakers also spoke about the SDGs that we have. Now, what are these Sustainable Development Goals? So these are goals that are targets, that are specific targets for all the member nations, India being one of them, right? For us to achieve by 2030. So 2030, we've got another 7 years to achieve these things. And there are goals in various domains, just like, let's say, for education, for infrastructural development, employment, health, right? All of these areas, there are specific goals. And as it was, although I work, like I said, I work in the area of addiction medicine, we work more on interventions with people. Specifically, when the organization invited me for this talk, I thought it's important that we look at what's there in the background, what is informing all these decisions that we are making, which means there's a lot of work that people have done in the background, literature searches and literature interviews that people have done in the background. And that brought about some information about, that tobacco use is something which is so ingrained in our communities as against other drug uses. Tobacco is so commonplace, it's so commonly available, just like how you get tea, coffee off the shops, you can also get certain tobacco products easily, right? So it plays a major role in impacting, right? It contributes a lot. Let's say almost 30%, 1/3 of the non-communicable diseases goals that we have from Sustainable Development Goals are directly related to tobacco use, to say. So I would like to focus today on certain aspects that I noticed, which is widespread in our community of late. And so the first thing to see is we are all aware that there are major health risks of tobacco use, that it affects every single organ of our body, right? If we go into any PHC in the country, primary health center in the country, we will see that there are a lot of government-sponsored posters about the ill effects of tobacco. And this is also for public awareness. So these are some of the goals
which have already been, let's say, we have been working somewhere on this line based on even the previous developmental goals, the MDGs, the Millennium Development Goals that we had, also had some goals for tobacco. So we have made some baby steps there. We have to, but I think with a short span of time that we have to achieve a lot of things, it's important that we take more bigger leaps in these areas. Okay. So to summarize a few points that our previous speaker spoke about, one is about how tobacco impacts, development is one about how does it affect agriculture in terms of occupying vast areas of cultivable land, which goes of tobacco use, and then that is not available for us to achieve our very basic food needs, right? The second thing which we speakers also spoke about earlier was that how, because of the human resource that is needed for this cultivation in all of these lands, now major part of our productive age group people, and especially women and youth, right? Even in a lot of places, it's also children who are not legally supposed to be employed, are employed in these labors in the lands for employment, and that is a more morbid thing than to say mortality. So while we talk about the impact of tobacco on development, the very obvious, of course, the more risky impact that we see is that it can lead to death. So that's lethal, that's the end of a life. But yes, that is, let's say 10 to 15, 12 to 12% of people who actively die every year because of tobacco related complications. The larger epidemic, the reason it's been called an epidemic, right, is that because without our obvious knowledge or notice, it has been slowly ingraining into a lot of morbidity that is developing in the community. So without even our knowledge, like we said, a lot of youth are experimenting with it. A lot of youngsters are trying to use it for, let's say, experimentation for pleasure and all of it. What happens with constant use? Of course, there's a lot of biological things that happen, and I think it's beyond the purview of our discussion today. But there are a lot of things that happen in the body, and our capacities get limited because of constant or regular substance use, including tobacco use. So let's say somebody, as a country, if we are capable of 100% of things, with a large section of the productive age group being engaged in these things, it comes down by, let's say, 10, 20%. And that can lead to a deficit in terms of our capacity to achieve goals as a country, right? Okay. So in the context of, like I said, in the context of SDGs, I would like to highlight a few goals which are there, and let's see how tobacco use per se is impacting this. So one of the goals which is there in the Sustainable Development Goals is ending poverty in all its form everywhere. So it's for every country to end poverty in their countries. Now we can, it's a very obvious understanding here that, because a lot of resources, individual family resources, are getting diverted to expenditure on procuring these products, on buying tobacco products, that leads to lack of resources to fulfill their very basic needs, right? They don't spend it on, let's say, a child is sick, there is no money to go to the hospital, but there is enough money to buy cigarettes or procure substances on a daily basis, right? So, and because we also saw this in our previous talk, that it is not about the individual's choice that I will use the substance. That is probably the initial 1 or 2 times when they decide as a conscious choice, okay, let me experiment with this substance. Once it sets in as an addiction, it is an illness. So unless it is treated, it is very difficult for the person to come out of it just with, let's say, internal motivation to quit and to say that, okay, I will not spend on it. So it also puts a lot of pressure on the health system to provide for healthcare needs for all of these people who are going through this addiction as a pandemic. So let's say if there are 2 patients who come with cancer-related complications and there are health professionals who are focusing on it, there are going to be 10 people who come with addiction or substance use-related complications, and we sadly do not have so much human resource in the health sector to focus on it, and that is creating some complications, right? So what does that mean? It means that we will have to probably curb, put some restrictions right in the beginning where they're able to procure it, where they're able to utilize all these substances. So that's one aspect. Second thing is about how does it impact the younger generations who are coming up, younger children who are, let's say, right now being born and growing up in our communities. Because of, like we said, the manpower, the human resource that's coming in, it can curb education for children, like especially in the rural areas where we are seeing from reports of the national surveys that children are being involved in
in the farms, right, to cultivate some of these things, some of these tobacco products. In BD rolling, tobacco rolling industries, younger population are being involved. That way, their quality of, let's say, skills are impaired, right? And that way, we already spoken about how, because of lack of cultivation, it does not allow us to achieve our food security goals, right? All of these areas are impacted. We already discussed that. Next thing is the level of environmental damage that it can lead to because of the quality of the land that gets spoiled, and it's no longer amenable for cultivating any more grains or any more food products that we essentially need, right? Okay, and then one of the things is in which I want to touch upon specifically is tobacco is the only product which causes harm not only to the person who's using it, but also to people around them. So let's say in a family, there's a man. I'm using the example of man because you know that there are also women who use it, but I'm using a generic example of a man. If the man of the house is drinking, right, it's going to have social impacts on the family. It's going to have health impacts only on the person. But if he's smoking, there are a lot of secondhand smoke exposure that happens to people around them, including their family members, their children, and anybody who's standing. If I'm a bystander on a bus and somebody is smoking, then I'm also going to be impacted by the smoke that they're inhaling, the smoke that they're letting out, right? So a secondhand smoke exposure causes for a lot of morbid exposure to larger public. So even if, let's say, 20% of our population is smoking, 40% of our population is exposed to the smoke that they're letting. So that causes, long-term implications for health for people like that. And so this way, there are a lot of specific goals. These are major developmental goals that I wanted to highlight here. And one other goal which we wanted to look at with all of you was that we are talking about reducing inequality within the country, within major, let's say, age groups, gender groups, and all of that. And because of like how certain groups of people are more engaged in the cultivation and things like that, it is going to hamper or maintain the inequality that is still there between these various social groups in our countries. So looking at all of these, so what are we going to do? What are the things that we can take as immediate steps to handle these things? Our previous speaker, very thankful to him for covering some of these topics very succinctly, where he was able to talk about some of the practical steps that we can take up for handling these situations. So certain things which, as I said, because although now we are talking about sustainable developmental goals, some of these things have already been covered even from 2015, where there have been baby steps. And certain things like, let's say, certain curbs on not having sale of tobacco products in the school zone areas, right? So many meters within the school zone, it's not supposed to be sold. So these are all good interventions which have come in. So it's also important that we appreciate what is already there. We do more of what is good already, and we implement it everywhere across the country. That's one thing which we learn from. The next thing would be to, yes, one major way which works in India is that if you impose proper taxes on all these products, then sale of it is going to get controlled. So when people know that they're going to pay higher taxes, we see that there are different tax slabs on various products. So if these products can be taxed at a higher level, right, then it becomes a premium product, and then automatically, of course, it is not a choice that the person is making, but at least it is not as offhand, like just like I can go and buy a biscuit packet, I go and buy a cigarette. I don't do that anymore, right? So that's one thing that we can think of. And certain restrictions, like Dr. Rajdeep was saying, like, restrictions on how much you can procure. And that comes not just from the person. There is some larger monitoring where, beyond this level, if we can do it with how much money we can withdraw from the bank every month, we can also do it for sale of tobacco. So how much more can I purchase this month? Not beyond this. And while we understand that if it is an illness, so they know that if beyond this I have a lot of craving for the tobacco and I cannot do without it, then within the public health system, within, let's say, the primary health center level, for people to see that, okay, they are struggling with tobacco related addiction. So let them go and seek help at the right place at the right time. That way, quality of life for that individual also improves and can bring them back to their maximum level of productivity that was there earlier, prior to when they got into addiction and things like that. So these kind of interventions are some things that we can consider as a nation, right? And at the same time, because
when it comes to self-help also. When people, it's also possible that a lot of youth, because of awareness, while they are exposed to a lot of, let's say, fancy things in the media, I would also like to appreciate them for the level of, because they have access to all this information. So if we can put all this information in more publicly accessible places, like if we can share photographs on Instagram, we can also share some, let's say, quick reading material on Instagram and platforms where our youth are actually accessible. So if we keep it as a booklet, they're not going to read it. So let's go where they are, put it in a form, a very short form, which they will quickly read and get some information, and we let them self-reflect on these things in the areas where they are. So I think I'll keep the rest of it for discussion because it's going to be a quite long day and we have one more speaker. So if these are just the major areas I wanted to discuss apart from what has already been discussed today. So yeah, I would thank everybody for this opportunity. And I can see that we're talking to a large group of youth, which itself is a very important place, because if every person here speaks to 5 other people about it, so maybe you're not going to sermonize them about it, but if you share that, okay, this is what I heard, what do you think? If you can discuss these things in your forums, in your groups, then we can set a large group of people thinking about it, right? And if there is even 1 or 2 people who actually need help, goes to a help-seeking source, then that would be, I would say, a success from the various talks that all of us are giving to. So thank you so much for this opportunity. And I'm open for any questions on the chat box or later if somebody wants to contact personally about it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your valuable words. I would now like to request Ranu to kindly go ahead with the quiz which ma'am has explained so far. I hope the participants have listened to what ma'am has said. Thank you so much. Thank you so much, Arpita ma'am. So our question based on ma'am's lecture is, what percentage of litter do cigarette butts constitute in urban and coastal cleanup? Litters क्या होता है? जो भी वेस्ट चीज होती है ना उसको हम लिटर्स बोलते हैं, और सिगरेट बट्स क्या होता है? जो जब भी हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो जो भी लेफ्ट आउट चीज रहती है जो हम फेंकते हैं बाहर, उसको सिगरेट बट्स बोलते हैं. तो question है, what percentage of litter do cigarette butts constitute in urban and coastal cleanups? And your time starts now. रानू, just 1 second. हमारा जो chat का settings है. Yes, ma'am. Yes. Everyone can please start answering. This was also something which Dr. Vinita had covered in her talk. She was also talking about this. So. Yes, we can see lots of answers coming in. Yeah, so with this we are
stopping the round here. Over to you, Arpita. Okay. I think we are left with one speaker, Dr. Rupa ma'am. Rupa ma'am? Yes. Am I audible now? Yes, ma'am, you Yes. are. Good evening, everyone. It's a pleasure to be sitting with such a learned speakers. First of all, I want to express my gratitude to Sanjeevani for organizing this event. Today, we gather here to observe World No Tobacco Day, a day specially dedicated to raising awareness about the harmful effects of tobacco and promoting a tobacco-free lifestyle. This is a day when we come together as a global community to unite against the tobacco epidemic that continues to plague our society. Tobacco use is one of the greatest public health challenges of our time. It takes a devastating toll on individuals, families, and communities around the world. Every year, millions of lives are lost prematurely due to tobacco-related diseases. Behind these staggering statistics lie personal stories of suffering, heartbreak, and loss. It is time for us to stand up and say no more. The theme for previous year's World No Tobacco Day was powerful one, coming to quit. It serves as a reminder that quitting tobacco is not only possible, but essential for our health and well-being. We must recognize that tobacco addiction is a complex issue, and quitting, of course, is not easy. However, it is a journey worth embarking on. And with the right support and determination, it can be achieved. Quitting tobacco is not just a personal victory. It is a triumph for our families, our communities, and our future generations. When we commit to quit, we break free from the chains of addiction and we reclaim our lives. We regain control of our health, our finances, and our happiness. By quitting, we inspire others to do the same, creating a ripple effect of positive change. Today, I call upon each and every participant to make a commitment to quit tobacco, whether you are a smoker or a chewer or someone who has been affected by secondhand smoke. This is the day to take a stand, to take a pledge. Quitting may not be easy, but it is possible. Please seek support from your loved ones, healthcare professionals, or helplines available in your community. Together, we can provide the encouragement and guidance needed to overcome the challenges. But our responsibility does not end with our personal commitment to quit. We must also strive to create a supportive environment for others to quit and to prevent tobacco use among our youth. Education is also a key in our fight against tobacco. We must educate youth and others about the risks associated with tobacco use, the benefits of quitting, and the available resources for support. By spreading awareness, we empower individuals to make informed choices and take control of their health. Let us not forget the power of compassion and empathy. Addiction is a social evil, and those struggling with tobacco use need our understanding, support, not judgment. Let us extend a helping hand to those who wish to quit, offering them the resources, encouragement, and compassion they need on their journey towards a tobacco-free world. Lastly, I want to reflect upon certain challenges. Those challenges we must acknowledge. Are we having quality services for tobacco cessation? The people who are interested in quitting, can we provide assistance, necessary assistance to them, and whether these services reaching to remote areas where people are actually wanting to do so? So how we can help them in quitting tobacco? By asking them what kind of support services they want or they require, listening their problems, encouraging them as well,
understanding and acknowledging that quitting is very, very difficult for them. Most of the smokers, once they quit smoking, they experience physical withdrawal symptoms. It can last anywhere from 48 hours to as long as 4 weeks. We need to provide them extra support and remind them that it will pass. We'll also have to encourage them to join some kind of support group. We need to encourage them to choose healthy activities. Celebrate their success on being smoke-free. Once again, I extend my gratitude to Sanjeevani for giving me the opportunity to share my thoughts. Thank you. Let us embrace a tobacco-free world. Thank you so much, ma'am. I would now like to request Ranu to kindly take over. Thank you so much, ma'am. Okay, so based on ma'am's lecture, we have the following question. I think this is the most easiest question for today. What is the World No Tobacco Day theme for this year? And y'all can start giving your answers. Y'all have just 1 minute. Okay, so with this, we are winding up our quiz session. So now I would like to request Ranu ki jaldi aap hamare answers discuss kar dijiye, because we could see lots of answers, लेकिन कुछ गलत भी है और कोई सही भी है. So let's see कि किसने गलत जवाब दिया है और किसने सही जवाब दिया है. So Ranu, I'm displaying the question one by one और आप answers बोलते जाना, ठीक है? Yes, Ranu, take it forward. Yes. So for this question, our answer is we have limited cultivable land, and crops of tobacco decreases quality of land. That's why we should stop growing tobacco. Ma'am, next question. Okay, the smokeless tobacco is available in the form of snuff. If you see all this cigarette, bidi and cigar, they can be smoked. Only snuff is another way wherein tobacco is available in a smokeless form. Ma'am, next one. Okay. What foods on our plates help in producing dopamine? The fruit, it's like fruits, vegetable, green leafy vegetable, nuts, and legumes. Okay, which mood disorder can excessive smoking result in? And the answer is depression. Okay, when child labor is woven into tobacco cultivation, can you mention which two rights of the child are violated? It's the right to education and violation of human rights. Which of the substances found in cigarette smoke contain carcinogen? Tar. I seen many of them gave nicotine answer, but I would like to say that nicotine is addictive in nature, but tar contains carcinogen. Ma'am, next one. What are some strategies to make everyday no tobacco day? I think this is a very open-ended question, and most of them have given like questions surrounding this thing: encouraging friends, family to quit smoking, tobacco-free environment, educating others on dangers of tobacco use, etc. No, ma'am, we did not have this question, I think.
Okay, which cancer is preventable? An answer for this one is oral cancer. What is the World No Tobacco Day theme for this year? And the theme is we need food, not tobacco. What are the harmful effects of tobacco cultivation? Some of the harmful effects are destroys ecosystem, it results in food crisis, and it deteriorates the quality of soil. Ma'am, next one. What percentage of litter do cigarette butts constitute in urban and coastal cleanup? And the answer is 30 to 40%. That's it. Done. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So we have our 3 winners with us. लेकिन हम थोड़े बाद में उनको announce करेंगे. So before that, I would like to invite Archita ma'am, our program coordinator, to please thank our sponsors. Archita ma'am, over to you. Archita ma'am, I have made you the quiz. Yeah. Thank you so much, Sumki. First of all, तो आप सबको thank you, Sumki, अर्पिता, मौली, और मुझे अभी यहाँ पे अर्पिता दिख रहे हैं, और रानू. मौली तो बैकग्राउंड में रहती है तो शायद नाम आप कम सुन पाते होंगे, बट ये जितने एक्टिविटी हो रही थी सब मौली के हाथों से हो रही थी. तो थैंक यू मौली, आप काफी अच्छे से मैनेज करते हो. सुमकी और अर्पिता ने काफी अच्छे से सब पूरा कंडक्ट किया. एंड रानू, आपके क्विज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे. तो थैंक यू ऑल द टीम. एंड डॉक्टर्स को थैंक्स बोलने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर. तो हमारे मेन स्पॉन्सर है NMDC. थैंक यू सो मच NMDC.
and thank you our co-sponsor Bharat Petroleum एंड जय किसान। आप तीनों के बिना हमारा ये प्रोग्राम जो इतना सक्सेसफुल रहा शायद नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच स्पॉन्सर। एंड एक नाम छूट गया था सोमादित्रा का। सोमादित्रा ये सब पीछे से हैंडल कर रही थी, कौन सबको मैनेज करना, तो मौली एंड सोमादित्रा आपके बैक जो वर्क चल रहा था, सो थैंक्स फॉर दैट। सबसे पहले मुझे लगता है ना, जो चीज आज हमने इस पूरे टोबैको डे के इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे जो सीखी, वो अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि टोबैको नहीं लेना, टोबैको क्योंकि कैंसर होगा। आज हमें समझ में आया, शायद मुझे तो आज ही समझ में आया, शायद मेरे से बहुत होंगे और, कि इट्स फूड क्राइसिस कितनी रिलेट करती है इस टोबैको की वजह से। तो सिर्फ कैंसर नहीं, खाने के लिए भी हमें इस टोबैको से दूर रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे आज, जो अगर कोई कहे कि क्या टेक था आपका आज के वेबिनार से, तो यही था कि फूड जो थीम भी है, और शायद मुझे भी बिल्कुल पता नहीं थी कि इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कितना सारा लैंड फर्टिलिटी उसकी खत्म हो रही है, एनवायरमेंट पे कितना ज्यादा असर हो रहा है। अभी तक हमारा फोकस सिर्फ यही था कि टोबैको से कैंसर होता है, बट सिर्फ कैंसर ही नहीं, जितने सारे हमारे एक्सपर्ट्स, आप रूबी मैम ने जहां शुरू किया वहां से ही कि फर्टिलिटी लैंड की खत्म हो रही है, सारे डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर वसुदेव, उसके बाद जो है डॉक्टर वसुदेव ने जो बच्चों के कैंसर से रिलेट किया कि उन्हें भी टोबैको को लेके कितना अलर्ट करना है कि उन्हें रिकरेंस के चांसेस हो सकते हैं दे स्टार्ट यूजिंग टोबैको, जो कि एक बहुत टेंडर एज होता है जब स्टार्ट करते हैं टीन एज के टाइम पे। और डॉक्टर गौरी रोकम ने भी डोपामाइन की बात की कि किस तरह से दूसरी जो चीजें उसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रख सकते हैं, नॉट अ टोबैको। संभवी मैम तो एज यूजुअल उन्होंने काफी अच्छे से अपना बताया एडिक्शन कैसे हम कम कर सकते हैं टोबैको का। डॉक्टर जसूजा, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर रीता, डॉक्टर गिरीश जाकर, सब ने इस चीज पे बहुत ही फोकस किया कि हमें फूड पे फोकस करना है, एंड फूड के लिए टोबैको को खत्म करना है। नॉट ओनली उसका कंजम्पशन, उसके एग्रीकल्चर पे कितना ज्यादा, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है तो वहां पे भी इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है, जो उस एग्रीकल्चर में है उन पे कितना बुरा असर हो रहा है। जो सेकेंड हैंड स्मोकर की बात कही डॉक्टर सुप्रिया ने भी, डॉक्टर रूपा ने और डॉक्टर राजीव गुहा सर ने भी बात की, काफी अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम स्मोक के थ्रू और टोबैको के थ्रू अपने पूरे एनवायरनमेंट को ही खराब कर रहे हैं। और अभी एक जो इंटरेस्टिंग चीज बची हुई है वो है क्विज विनर्स की, तो हम उसकी भी अभी बात करेंगे। रानू, आपको क्या बताने के लिए हमारे विनर्स की? ओके, सो अर्चिता जी, मैंने आपको रिजल्ट्स भी भेज दिए हैं, हमारे अरे वाह, विनर्स कौन है। और अभी हम विनर्स को स्पॉटलाइट पे लाएंगे बिकॉज वी विल वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। और हम चाहेंगे कि हम तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सबसे फीडबैक नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए हम एक फीडबैक लिंक भी डालेंगे। तो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स हम लोग लिंक उसके बाद 5 to 6 मिनट ओपन रखेंगे, आप लोग अपना फीडबैक वहां पे दे सकते हो। अच्छा लगा, बुरा लगा, आपने क्या सीखा, कुछ इम्प्रूव अगर हमें करना है तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। सो वट एवर इज योर फीडबैक, यू कैन ऑब्वियसली गिव योर फीडबैक। एंड अर्चिता मैम, सबका दिल धक 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 हो रहा है, सोच बिल्कुल। रहे हैं मेरा भी धक धक कर रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो आप लिंक में अपना नाम और अपना ईमेल बिल्कुल सही स्पेलिंग आप डालना प्लीज, है ना, अगर इफ यू वांट ई सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत होगी तो आपके काम का नहीं होगा सर्टिफिकेट, आपकी ईमेल आईडी में स्पेलिंग गलत होगी तो आपके पास पहुंचेगा नहीं, फिर आप परेशान हो गए, है ना। तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से डालना, एंड फोन नंबर भी, अगर, और जो विनर है उन्हें तो खास करके ध्यान रखना है। तो हमारे आज 3 विनर हैं, और फर्स्ट स्पॉटलाइट में आएंगी SK शाहीन बेगम। एक मिनट मैम, मैं उसको पहले
So our first winner is SK Sahina Begum. साहिना जी ने बहुत सारे करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो शाहिना जी प्लीज अपना वीडियो आप ऑन कर ले, प्लीज अपना वीडियो आप ऑन कर ले। आप हमें दिखने भी चाहिए, इतनी मेहनत की है आपने। यस शाहिना जी, तो बताइए आपको कैसे लगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको सेशन अटेंड करके कैसा लगा? मुझे तो ये सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टोबैको खाने से कैंसर आता है, कुछ और डिसीजेस, क्रॉनिक कॉफ सब भी आते हैं, और सिगरेट में तार की वजह से कैंसर आता है, क्विज की वजह से। और इंफॉर्मेशन बहुत इंफॉर्मेटिव है। जैसे मैं न्यूट्रिशन कोर्स पढ़ती हूँ, सो ये बहुत में यूजफुल है और वेरी इंफॉर्मेटिव है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्लैड टू अटेंड दिस वेबिनार मैम। यस ओके, तो थैंक यू शाहिना। थैंक यू शाहिना जी। थैंक यू। तो शाहिना जी, आपको रानू अभी प्राइवेटली मैसेज करेंगी, वो आपको एक नंबर देगी, फोन नंबर, प्लीज रानू जी को आप कांटेक्ट करो, आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दो और आपका लकी प्राइज आपके घर पहुंच जाए, ठीक है? ओके शाहिना अपनी वीडियो ऑन ही रखना प्लीज। हाँ, आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ हमारे सेकंड विनर को, इस पूजा त्यागी। Congratulations, Pooja. Thank you so much, ma'am. पूजा जी, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे? वॉइस इको हो रहा है आपका थोड़ा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड फर्स्ट टाइम तंबाकू के बारे में इतना जाना मैंने, क्योंकि गांव में मैंने बहुत से लोगों को खाते देखा था, बट इतना नहीं पता था कि इतना नुकसान इससे होता है। हाँ, बीमारियां होती हैं ये पता था, लेकिन जमीन और फसल, भुखमरी, ये सब भी होता है, ये मुझे आज पता चला। सो अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पूजा, आप भी अपना नंबर आप शेयर करेंगे, है ना? हाँ जी मैम। रानू मैम के साथ। मैम, I'm happy to say that Pooja is a current cancer student. हाँ, मुझे इसलिए लगा, वो देखा सा फेस लग रहा है। एंड और द पूजा थर्ड जी ना विनर फोन के साथ पूरा ऐसे बैठी थी, जब आंसर मतलब जब भी आंसर्स आएंगे पूजा जी फोन यहाँ पे लेके खड़ी है, बस आंसर देना है मुझे। तो यस, कंग्रेचुलेशंस पूजा जी, कंग्रेचुलेशंस। ओके, एंड थर्ड हमारे जो विनर है डॉक्टर अनुपमा। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर अनुपमा, आप किधर हो? हेलो मैम। हेलो। Congratulations. Not possible. Like he's like let's stand on the first 10 winners. And the 10 is not possible. 5 we can try. रानू कैन यू प्लीज म्यूट, रानू आपका अनम्यूट है फोन, कैन यू प्लीज? कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुपमा। डॉक्टर अनुपमा, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे? Yes, ma'am, definitely. It was very informative session, ma'am, right from cultivation of tobacco, the side effects of it, to the cancer and how we can help the others and all. They were very nicely dealt, ma'am. Thank you so much to the Sanjeevani organizers for giving us a wonderful session of 3 hours where there was no boring, ma'am. Continuously, we were hearing every word of the speaker. Thank you. थैंक यू सो मच। तो आप भी रानू को प्राइवेट में एक मैसेज कर सकते हो पर्सनली, है ना? तो कांटेक्ट कर सकते, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड वीडियो वी ऑन सेंड यू करिएगा। या तो मैं आपको नंबर सेंड कर रही हूँ, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा अपना प्राइस लेने को, ठीक है? यस, और मीनवाइल अभी सब लोगों को लग रहा होगा चलो अनाउंस हो गया है एंड हमें नहीं मिला, अभी हमें ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब टू मेक यू मोर लिटिल बिट मोर हैप्पियर, हम बल्कि 3 नहीं, हम 5 विनर्स को प्राइज देने वाले हैं, बिकॉज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे और इतने सारे लोगों ने आंसर्स किया, हम कैसे हम तीनों को ही प्राइज देते, राइट? दैट वुड बी लिटिल अनफेयर। तो आई वुड लाइक टू अनाउंस द नेक्स्ट विनर, जो हमारा 4th विनर है, दैट इज समवन विद द नेम SOS कोलकाता।
SOS कोलकाता। प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, SOS कोलकाता। Ranu, could you please check SOS Kolkata YH2? Yes, ऐसे ma'am. नाम से है। Yes, I ma'am. have I'll just made co-host, but पता नहीं क्यों उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। SOS. Okay. Yeah. Okay. मैम वो मतलब म्यूट पे है and their video is also off. So हमें कैसे पता चलेगा कि अब वो है या नहीं है लाइन पे? Okay. Meanwhile, I would like to move to the. Let me check वो है कि नहीं। हमारा जो 5th विनर है दैट इज मलय रजक। मलय रजक Ma'am, SOS Kolkata SOS is here. कोलकाता। Okay, SOS, is it children's home? Yes. Okay. SOS is a children home. Yes. तो किसने आंसर किया था आप लोगों से? वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सेशन अटेंड किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों के ग्रुप से किसने आंसर्स दिया था, प्लीज बता दीजिए। तो मीनवाइल मैं SOS को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। SOS, इट इज अ चिल्ड्रंस होम। इट इज काइंड ऑफ, ये सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं एंड दे डू रियली गुड वर्क। SOS हमारे बहुत जगह पे ब्रांचेस है। सो यस सर, यस सर। सो कंग्रेचुलेशंस सर, यू वर ऑपरेटिंग राइट? आप ऑपरेट कर रहे थे चैट्स? हाँ हाँ हाँ, नहीं, बच्चे लोग कंग्रेचुलेशन। कर रहे थे। ओके। अभी बच्चे लोग बोला कि वो लोग 4th आए हैं, तो मैं इन लोगों के सामने आया हूँ। ओके ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को भी एक अवार्ड मिला है। सो प्लीज रानू आप लोगों को चैट पे एक नंबर देगी, प्लीज वहां पे आप लोग अपना एड्रेस बता दीजिए सो दैट वी कैन सेंड यू द प्राइज। ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस टीम, आप लोगों ने 7 पे आंसर्स दिया एंड कंग्रेचुलेशंस। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग अभी बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे आप लोग ये सब कुछ फॉलो करोगे, आप लोग टोबैको नहीं लोगे और लोगों को भी सिखाओगे, राइट? I'm proudly saying that none of these boys have ever smoked. Okay, wonderful, wonderful. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, so we have our last winner, that is Malay Rajak ji. Thank Yes, you, ma'am. congratulations Malay. थैंक यू मैम। मेरे को उतना अच्छा इंग्लिश नहीं आती। मैं कोई रहता बात हूँ, नहीं। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, इसलिए मेरा मतलब जो लैंग्वेज है वो है बंगाली लैंग्वेज है, मैं जो जिसमें बात करता हूँ, पर हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू मुझे इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए। और आज जो मैंने सीखा, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखा, जो तंबाकू के मैंने जो जानना नहीं था वो भी मैंने सीखा। मैंने मेरे 2 दोस्त को तंबाकू से छुटकारा भी दिलाया है, उसके घर वालों को भी बोला है और पिटवाया है, ऐसा ऐसा वक्त गया। पर आज तक मैं कभी भी तंबाकू नहीं यूज करता हूँ। और अभी अभी तक अगर कोई मेरे सामने पीता है तो मेरे कारण उसको प्रॉब्लम हो जाता है, मैं मना करता हूँ, नहीं करता है तो पब्लिक में जोर से कुछ बोल देता हूँ तो वो छोड़ देता है। मतलब अच्छा लगता है। और आज का सीजन इतना अच्छा गया, मतलब पता नहीं चला इतना जल्दी कैसे बीत गया समय। 3 घंटा मैंने ऐसा लगा कि बहुत अच्छा कुछ चीज
थे जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था इसके कारण होता है। जैसे खेती बाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ पर इसका यूज होता है, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये भी होता है वहां पर। यस, थैंक यू मलय जी। बट अभी से इस सेशन के बाद से आगे आप बोलते थे बस सिगरेट मत पियो, दैट इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन अभी यू विल हैव पॉइंट्स टू से कि क्यों ये इंजीरियस है, राइट? फुल पर्सन विद द नॉलेज, राइट? ओके, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, आपके प्राइवेट चैट पे एक नंबर दिया जाएगा, दैट इज माय नंबर। आप प्लीज वहां पे मैसेज कीजिए, वहां पे अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर अच्छी तरीके से डालिए and we will send your gifts there. Okay, thank you so much. And also there is a special gift for Dr. Rita Kalra ma'am, because she has been actively answering all the questions, मतलब being the one of the guest, तो हमें बहुत अच्छा लगा ma'am, because that is kind of an encouragement, because being a resource person of the event today, हमें सब कुछ पता ही होता है generally, but then बहुत अच्छा लगता है जब encouragement होता है। And thank you so much ma'am. So now I would like to hand over to Archita ma'am. And in the meanwhile, I would like to request Ranu, please आप feedback link chat box पे डाल दीजिए। लिंक सब लोग क्लिक कर लीजिए, अपना नाम अच्छे से डालिए, करेक्ट नेम, सो दैट सर्टिफिकेट पे करेक्ट नेम जाए। ईमेल आईडी अच्छे से डालिए एंड योर व्हाट्सएप नंबर, ताकि अगर ईमेल पे ना जाए तो हम आपको व्हाट्सएप कर दे आपका सर्टिफिकेट। एंड ऑल्सो इफ यू नो एनी कैंसर पेशेंट जिन्हें मदद की जरूरत है, प्लीज फील फ्री, हम हमेशा उनके लिए है। सो कॉल अस एट आवर हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 8691000800, 8691000801। सो अर्चिता मैम, ओवर टू यू। तो थैंक यू सो मच। अभी जो सारे पार्टिसिपेंट थे, जो हमारी मैक्सिमम आज स्ट्रेंथ थी 380 के आसपास, तो जो आज ज्वाइन हुए उन सबको थैंक यू सो मच। अभी तक काफी सारे लोग जुड़े हुए भी है, और जो इतना अच्छे से ये था कि हम बोर नहीं हुए। एक्चुअली दिस इज द पॉइंट, हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज मिली कि कोई भी बोर नहीं हुआ, और हम इस चीज को चाहेंगे कि ये वर्थ है, इसलिए ये वेबिनार सक्सेसफुल है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेटिव रहा, काफी इंटरैक्टिव भी रहा, और प्राइजेस तो मिले ही मिले। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ऐसे वेबिनार्स हमेशा करते रहते हैं और आप हमसे जुड़ते रहते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू नॉलेज बढ़ती रहेगी। और जैसे रूबी मैम ने शुरू में बोला था कि आप 10 लोगों को जाके बताओ, तो इस तरह से ही बातें ग्रो होती हैं। लाइक जो अच्छी चीजें हैं वो वैसे ही ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती हैं, बढ़ती हैं। तो आप सब जरूर 10 लोगों को अवेयर करोगे इस सारी चीज को लेके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू एवरीवन। फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट, चैट पे एक लिंक दिया गया है, फीडबैक लिंक, प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बिकॉज तब हम अपने आप पे भी बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो एज सुन एज आपका फीडबैक कंप्लीट हो जाता है, यू कैन प्लीज लीव द मीटिंग। हम मीटिंग को अभी 5-10 मिनट ऑन रखेंगे ताकि सब आराम से शांति से लिंक फिलअप कर सके, फॉर्म फिलअप कर सके। ओके, सो रेस्ट जिनका हो गया है, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। सो या रानू प्लीज फिर से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। जी मैम, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू अस, मैं यहाँ पे हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है मैं वो डाल रही हूँ, आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो, किसी को इंटर्नशिप करना हो, किसी को कैंसर के बारे में जानना हो, किसी को कहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा बेस्ड ऑन योर प्लेस, कहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ हेल्प रिलेटेड टू कैंसर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दैट इज 8691000800, 8691000801।
नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पे आप कौन से स्कूल से हो, कौन से कॉलेज से हो, कौन से यूनिवर्सिटी से हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी कॉर्पोरेट से हो, किसी भी एनजीओ से हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक एनीथिंग। ओके, यस। और जिनका हो गया है आप मीटिंग्स छोड़ सकते हो। हमारे टीम्स को भी मैं बोल रही हूँ, यू कैन लीव द मीटिंग। हमने बस लिंक के लिए मीटिंग को ओपन रखा है। हमारे टीम मेंबर्स भी, यू कैन लीव द मीटिंग प्लीज। रानू प्लीज एक बार लिंक फिर से शेयर कर दीजिए। लोकेशन में आप कहाँ से हो आपको वो डालना है, कहाँ से हो आप, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, जहां से भी हो आप डाल दीजिए। रानू प्लीज शेयर द लिंक अगेन इन द चैट। सर्टिफिकेट आपको मेल में मिलेगा। आपको हम मेल पे सेंड करेंगे, हम आज नहीं करेंगे। आप लोग जो लिंक पे डाल रहे हो डिटेल्स, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल क्रिएट द सर्टिफिकेट। उसके बाद इसी वीक पे आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, और आपको जब मेल पे आ जाएगा आप तब उसको डाउनलोड कर सकते हो। मॉली, could you please share the link in the chat box, please? Yes, ma'am.